So music I've always considered as an art. I'm not considered as a task. आप शायद मेरा नाम फिल्मों में नहीं देखेंगे आजकल. इसका यही रीजन है. It's become a task. कभी प्रोड्यूसर को सुना है, फिर डायरेक्टर को सुना रहे, कभी कभार एक्टर के पास जा रहा है गाना. In Hollywood also is the same thing, bro. Right. खुशबू of the art form that somewhere gets lost. Yeah. It's not like a report card that it has to be scrutinized by so many people. मुझे याद है जब हम चक दे बना रहे थे और हम लोग ने फिल्म देख ली थी, पूरी पिक्चर खत्म हो गई और यश जी बाहर चले गए ना. वी वर लाइक वरीड कि क्या हो गया. यश जी ने कहा कि जब इंडिया जीत जाती है ना और शाहरुख फ्लैग तिरंगा को देखता है तब गाना चाहिए हमको. उसी रात को मेरे पास वो गाना था, एक तरफ तेरी धड़कन थी, सांसें है तेरी दूजी ओर, मौला मेरे टूटे ना ये डोर. ये मैंने डोर के लिए बनाया था. तो जयदीप ने वहीं पर लिख दिया कि तीजा तेरा रंग था, मैं जिया तेरे ढंग से मैं. These days I miss that artistic collaborations with a very pure heart. I mean, Michael Jackson, my biggest hero. Madan Mohan, my biggest hero. I'm a very hyper guy. I like to do things fast. Like Hole Hole, for instance, we had made it in one day. Music is not my job. It's my life. This is who I am. The new attraction that is really killing me is AI. AI. It's insane. It's amazing. I remember while making Darmiya, I was reminiscing a heartbreak which had happened some time ago. Many years ago. बिखरे नहीं तो कैसे निखरोगे, उलझे नहीं तो कैसे सुलझोगे. It's important to be broken so that you can rise. Hello everybody. It gives me great joy to be even sitting here at this moment because these are moments that we all live for as artists. When we get to meet someone who has such an amazing body of work, मतलब हम imagine नहीं कर सकते. हमने तो ये barely scratched the surface, but here is someone who has done anything and everything that is there to do as an artist, as an entrepreneur, and also as a human. It makes me very nervous also to be alongside such a personality, but I am just enjoying one emotion, that is joy. And thank you so much, sir, Salim sir, for being here. Oh, come on, Nakash. It's such a pleasure and such an honor. Thank you for doing I am this, so happy to come to your new space. बहुत inspiring. Thank you, sir. It's got a really good energy, good vibe. Thank you. And I'm sure, like, you know, your music is incredible, and this podcast would have some more reflections on your. Sir, hopefully, on sir, your I'm just people whom we look up to, and sometimes there's this fear of coming across as not being cool at the moment. कुछ nervousness में या कभी ऐसे moment पे कैसी बात निकल जाती है जो आप बाद में सोचते हो कि अरे यार ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था. तो ऐसा ही होता है आपसे मिलके कि मुझे पता है आप बहुत फ्री हो. मैं ऐसा क्यों बोल रहे हो आप मुझे? नहीं, बट सर वो आपका I'm just मैं एक स्टूडेंट की तरह हूँ यार. मैं रोज सीखता हूँ, रोज कोशिश करता हूँ, गिरता हूँ, उठता हूँ. बट सर आप कितनी चीज़ें आप करते हो, और म्यूजिक प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग फॉर अदर कंपोजर्स, डूइंग एड जिंगल्स, सो मेनी थिंग्स. मैं म्यूजिक के अलावा और कुछ करता ही नहीं हूँ. तो बेसिकली एवरीथिंग इज कनेक्टेड. मुझे बहुत शौक था एज अ म्यूजिशियन. जब मैं दूसरों के लिए जब मैं प्रोग्रामिंग करता था तो मुझे फीलिंग आई थी कि यार आई शुड मेक माई ओन सॉन्ग्स एंड और ऑनेस्टली ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये करना है, ये अचीव करना है, रिकॉर्ड लेबल शुरू करना है. करते करते हो गया सब. मैंने कभी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि यार ये करेंगे. ऑनेस्टली मैं बहुत ट्रैवल करता था एज अ म्यूजिशियन. पहले एज अ दूसरों के लिए बजाता था शोज में. राइट. जब भी हम लोग कभी लंदन गए या अमेरिका गए या व्हाटएवर, तो मैं हमेशा टार रिकॉर्ड्स, वर्जिन रिकॉर्ड्स, तभी वो रिकॉर्ड स्टोर्स होती थी. तो मुझे सीडीज का बहुत शौक था. मैं जाता था तो मैं देखता था कि इंटरनेशनल सेक्शन में हमेशा कुछ स्पेनिश फोक म्यूजिक होता था, अफ्रीकन फोक म्यूजिक, बल्गेरियन फोक म्यूजिक, और इंडियन म्यूजिक के मामले में सिर्फ फिल्म म्यूजिक ही होता था या क्लासिकल म्यूजिक होता था. तो मैं सोचता था कि यार फोक म्यूजिक इंडिया का कितना कमाल है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं मिलता यार ये. तो शायद कोई बनाता ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है. मैं 99, 90, 95, 96 की बात कर रहा हूँ ये. And I felt like, yeah, we should have a folk album. I should make it.
मैं क्यों रुकूं किसी के लिए बनाने के लिए, you know? At this time, were you actively composing for films and I was not very actively. मेरी मैं बैकग्राउंड स्कोर किया था हमेशा का, right? और मैं एल्बम्स करता था मैग्ना साउंड के लिए. Okay. मैंने एक एल्बम किया था रागा रागा, और फिर जैस्मिन बरूचा का एल्बम किया था, और 2-3 और ऐसे श्वेता शेट्टी की एल्बम की थी मैंने. तो और फिल्म्स में मैं बैकग्राउंड स्कोर्स करता था. एक हमेशा करके एक फिल्म आई थी, वो that was like one of our first big films, background scores. तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं. शोज बहुत करता था तभी, for different other artists, and I used to play keyboards. किस तो एक तो I used to play Tabla Beat Science, which was Zakir Hussain Saab and Sultan Khan Saab, and then it had Karsh Kale also, so I was part of that band. Then I also traveled once with Bhavdeep Jaipurwale. He's a very good singer, ghazal singer, and classical singer. So I traveled once with him. So that way, ऐसे कुछ आर्टिस्टों के साथ मैं travel करता था as a keyboardist. तो हमेशा जाता था. And then that's where मैं सोचा कि यार एक folk album करते, जहाँ इंडिया का folk वहाँ पे खिले, सुने लोग उसको. क्योंकि ऐसी एक एल्बम, और वो भी मेरा बड़ा मन था कि I should record it also in a very international studio. Where the music gets out, because Star Records, Virgin Records, ये जो outlets थे, यहाँ पे also international जो labels थे उनके recordings होती थी, सीरीज ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी. So I felt like Virgin Records इंडिया में आया था तभी. तो अतुल चुरामनी से मेरी बात हुई, and I felt like I want to do a folk album, and so we recorded all this different folk artists from all over India. उसमें सुल्तान खान साहब का एक गाना था, एक शुभम मुद्गल का था. And that album we recorded in 97. I mixed it in 98 at Peter Gabriel studio in England. मेरे को बहुत शौक था Peter Gabriel, because I know नुसरत फ़तेह अली खान and all these amazing incredible artists. उनकी शुरुआत Peter Gabriel के स्टूडियो से ही हुई है in the UK. सबने देखा था कि यार I want to do this. So then we recorded the album here, but we mixed it at Real World Studios in Bath. Bath is the name of the place in the UK, which is Peter Gabriel's studio. And where he mixed Passion, that was this first, the Passion was the album where we first heard Nusrat Fateh Ali Khan. Yeah. That album. So I mixed it in that very studio. Wow. तो मैं अपने सपने, I was just living my dreams, and I was just, at that time I was 23 years old, 22 years old. No. And I was like, and that album released in 99, and that was Bhumi. That was then, and it was way before any Coke Studio or anything of that sort. Was it easy to find the process of releasing an album, since ये आपका पहला ही? It wasn't because non-film stuff शुरू हो गया था तभी. मतलब 90, Alisha Chennai, Made in India, Baba Saigal और Shweta Shetty. तो I was also doing a lot of albums at that time for Magna Sound. तो non-film music चमक रहा था तभी. Picking up, huh? I mean, if you see honestly, all the artists ना, films ना क्या करता है, सबको अपने काबू में ले लेता है, सबको swallow. We all get swallowed. I was also a non-film artist. I mean, Adnan Sami, Alisha Chennai, so many artists, Lucky Ali. ये लोग कभी फिल्में गाए नहीं थे, ये लोग के एल्बम्स ही निकलते थे बाहर. फिल्म्स का एक ये है ना कि वो हमेशा, हनी सिंह बेस्ट एग्जांपल. He always used to come out with his albums. People used to. Then he started, doing one single or the other in films. तो इस तरह का हमेशा ये होता था कि नॉन फिल्म आर्टिस्ट को हमेशा फिल्म में खींच लेते थे कि ये टैलेंट अच्छा है. मेरा भी ऐसे ही कुछ हुआ. 99 में मैं भूमि रिलीज हुआ मेरा, एंड इमीडिएटली आई गॉट लाइक एल्बम. इंडस्ट्री में लोगों तक पहुंच गई थी, लोगों तक नहीं पहुंची, आम आदमी तक नहीं पहुंची, बट इंडस्ट्री में लोगों तक पहुंच गई थी. कुछ चर्चा हो गई थी कि यार ये सलीम सुलेमान ने ये एल्बम किया है. उसमें एक गाना उस्ताद सुल्तान खान का बहुत मशहूर हुआ था, कटे ना ही रात मोरी पिया तोरे कारण. Yeah, so that was from Bhumi, the first Bhumi in 99. And then करते मुझे एक दिन राम गोपाल वर्मा का फोन आया. मैंने सत्या का बैकग्राउंड स्कोर एज ए म्यूजिशियन किया था, संदीप चावड़ा के साथ. So he knew me.
Okay. So then he called me. He said, "Okay, I'm doing a film. Are you interested in doing the music?" So then I said, "Okay." And then he showed me the trailer. I got scared. It was Bhoot. My So God. then that, and then Ab Tak Chappan, and then somehow I got, Kunal Kohli called me one day. He said, "Yaar, I love your score on Ab Tak Chappan. I'm making a movie called Hum Tum." Now, Hum Tum was very different from Ab Tak. And I've never done a Yash Raj film. So, then he introduced me to Adi. Then I did एक song, एक background score में एक song की एक element था. मतलब एक requirement थी, but गाना नहीं था वहाँ पे. हम तुम्हें जतिन ललित का music था. Right. बैकग्राउंड स्कोर हम लोग कर रहे थे, बट एक पोर्शन था जहाँ पे अभिषेक बच्चन की शादी होती है. तो दैट पार्ट वाज लाइक अ सॉन्ग, व्हिच सुलेमान एंड मी डिड, लाइक इट वाज पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड स्कोर. We did it like a It song. became like a song, like they had So words. Adi noticed that. He said, like, "You've composed this." I said, "Of course." So he said, "Okay, good. Then as we finished Hum Tum, he told us that, "I'd like you to meet somebody. There's a filmmaker called Arjun Sablok, and that Neil and Nikki." So then we did Neil and Nikki. Neil and Nikki का background का गाना और album mix हुआ था, and that's when he offered me Chak De. So करते मैंने वही बोल रहा हूँ मैं, नकाश, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एज अ म्यूजिशियन मैं फिर कंपोज़र बन जाऊँगा. अच्छा, कंपोज़र भी ऐसा था कि मैं गाने बनाता था. फिर ऑब्वियसली एक दिन हम लोग एक फिल्म पे काम कर रहे थे और मैंने गाना बनाया, अली मौला. एंड वो गाना हमने करण को सुनाया. करण को बहुत पसंद आया वो गाना. He said, "We'll do it for Qurban. We'll use this. It's a beautiful melody and this and that." So I said, good. So we finished the song, and then I said, "Karan, I would like Ustad Rashid Khan to sing this song." So he said, "Okay, why don't you sing it? It's you have a good emotion in your voice." Had you already sung the I had sung the scratch? scratch. Okay. Scratch गाया था मैं. तो लेकिन मेरी बड़ी तमन्ना थी राशिद खान साहब से गवाने की. तो he said, "Okay, whatever, try." Then I called Khan Saab. Sultan Khan Saab was my guru. My ustad. I learned a lot with him because I was also playing keyboards with him. Right. So while playing, I was learning, and then I became a proper shagird. Then one day I called Khan Saab. I said, "Ke Khan Saab, मुझे आपकी ज़रूरत है. I want Rashid भाई to sing this song." अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ. तो स्टूडियो आए थे. तो खान साहब ने वो गाना सुना, and then उनको अच्छा लगा. तो he used to call me सलीम भाई. हालांकि मैं बहुत उनसे छोटा हूँ और मेरे उस्ताद है. He used to call me सलीम भाई. सलीम भाई, जब मैं जवान था तब मैं अच्छा गाता था, पर तभी कोई मुझे सुना नहीं. मैं सारंगी ही बजाता था, आज भी बजाता हूँ, पर आज लोग मेरी आवाज़ को पहचान रहे और सुन रहे और पसंद कर रहे. तो बोला हाँ बिल्कुल. तो he said, अभी मेरी आवाज़ टूटी फूटी है, सुर कभी नहीं लगते, पर फिर भी लोग पसंद कर रहे हैं मेरी आवाज़. आप भी यही चाहते हैं? सबसे बेटा आपने अच्छा गाया है, थोड़ा और मेहनत करके गा लो. और राशिद भाई तो है ही कमाल, लेकिन आप कोशिश करो. So he pushed me, and then Sulaiman never ever pushes me. Okay, he never tells me like, "Oh, you've sung it well," or like, brothers के बीच में एक अलग dynamics होता है. So, but he also liked my voice on that song. So, मेरी हिम्मत बढ़ गई. It was crazy. गाने के words भी थे, हिम्मत अता करो ओ मददगार, और मौला अली का नाम था. So, मैंने बिस्मिल्लाह कर What a bismillah. Beautiful. एंड तो ऐसे करते मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था, कुछ प्लान नहीं किया था. फ्रॉम अ कंपोजर देन आई स्टार्टेड डूइंग, आई स्टार्टेड सिंगिंग. सेम थिंग हैपेंड फॉर बैंड बाजा बारात. I wanted Daler to sing it, but obviously his voice was too big for Ranveer Singh. मैं एवी की बात कर रहा हूँ. Oh. And दूसरे मतलब we got Master Salim to sing it also. Oh, you recorded him? He recorded his version is there in the end credits. End credits में Master Salim की आवाज है. But रणवीर की पहली फिल्म थी, and आदित्य चोपड़ा चाह रहे थे कि it should be a cool voice, like उसकी बहुत ठेठ आवाज है. अपना मास्टर सलीम की आवाज कमाल है. he is beautiful singer, he is a very तैयार, and उसकी आवाज मोटी है और थोड़ी ठेठ है. he wanted a cool young voice, तो मैंने स्क्रैच गाया था. तो अमिताभ भट्टाचार्य pushed me again. He said कि I mean he calls me हुजूर, I call him जनाब. He said हुजूर आप कोशिश कर लो.
तो ऐसे ठीक है, आई ट्राइड अगेन। तो अभी ये गाना भी सेट हो गया था, मतलब अच्छा मैं स्टूडियो से मुझे निकलने का शौक ही नहीं है, मैं इतना कंफर्टेबल हूँ खाना पीना स्टूडियो में, आई बिल्ड अ ब्यूटीफुल स्टूडियो, सो आई रियली डोंट गेट आउट ऑफ दैट, आई एम वेरी कंफर्टेबल। हमारी कुछ कुछ फिल्में जैसे चक दे, आजा नचले, फैशन, कुर्बान, रब ने बना दी जोड़ी, ये सब फिल्में ना बहुत मशहूर, गाने इसके बहुत पॉपुलर हो गए थे बहुत कम टाइम में। जैसे कि 2006 में चक दे आई, 7 में आजा नचले, 8 में कुर्बान, फैशन भी उसी वक्त थी, डोर भी आ चुकी थी, और बहुत सारी, रब ने बना दी जोड़ी आई, फिर बैंड बाजा बारात, और फिर मैं उसी वक्त इंडियन आइडल भी कर रहा था। सो इट वाज, और ये गाना बड़ा मशहूर हो चुका था, हैवी हैवी लुट गया, एंड नीरव को कॉल्स आने लग गए थे शोज के लिए। तो मेरे को वैसे ही चक दे, आजा नचले, वो टाइम पे शोज के कॉल्स आते थे। नीरव इज माई मैनेजर बाय द वे, सो आई यूज्ड टू टेल हिम नहीं मेरे को नहीं करना है शोज, मेरे को नहीं, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग शोज एट ऑल। बट रीजन क्या था? आई वॉज कंफर्टेबल यार, स्टूडियो में गाने बना रहा था, बैकग्राउंड स्कोर्स कर रहा था, और कौन जाएगा यार टूर वूर पे। मैं प्रेजेंटर तो नहीं, मगर मेरी ये कोशिश है कि मैं आप तक लाऊं रियल, रॉ, अनफिल्टर्ड कॉन्वर्जेशंस, और बात करूं महान महान आर्टिस्ट लोगों के साथ, ताकि आपको और मुझे, हम सबको मिले प्रेरणा और मोटिवेशन अपने सपनों को चेस करने के लिए। सो कीप वॉचिंग नकाश एज इज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आप जब पहले लाइव कर रहे थे, व्हेन यू वर डूइंग लाइव, दैट टाइम आई वाज अ कीबोर्डिस्ट विद, so but then you, I'm sure you would be enjoying the live scene. yeah but a lot. it Traveling. was it was a very intimate scene, वो थोड़ा गजल, ये वो, it was a different scene altogether, and when I was playing with Zakir Hussain Saab, like on Tabla Beat Science, that was a very different experience. Like we used to do massive shows. This Bollywood shows का जो चक्कर था, it was in between somewhere. Right. And we started getting calls, a lot of calls for wedding shows first, and I wasn't sure whether we should do that or no, whatever. गाना मेरा बैंड बाजा बारात का था, दूसरे सब रब ने बना दी जोड़ी, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, so I wasn't sure. मेरे को नीरव हमेशा कॉल करता रहा, सर एक शो है दिल्ली में, करेंगे? नहीं। सर एक कॉलेज का शो है, करेंगे? नहीं। कॉलेज भी नहीं करना है मेरे को, मैं ना ही बोलता था पहले। फिर क्या हुआ कि हमने 2010 में एक गाना किया विच वॉज फॉर फीफा। Now what happened was some guy who came to me, he said कि यार मुझे गाना बनाना है, अफ्रीका में ये वर्ल्ड टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा वर्ल्ड टूर, बहुत बड़ी बात है हम अफ्रीकन्स के लिए बहुत बड़ी बात है। So I said okay. So he said we want to do a song. I said okay. So he did a song. He came from Kenya. Okay. I used African artist. मतलब I also sang. 2 lines I sang, and majorly these guys sang. 2 African artists, one from Kenya called Eric Wainana and one from South Africa. His name was Loyiso Bala. Now Loyiso Bala was like the top singer of South Africa. जब फीफा वर्ल्ड कप जोहानिसबर्ग में ओपनिंग सेरेमनी हुई, तो लोइसो बाला को सबसे बड़ा स्लॉट मिला। एट दैट टाइम, बाय देन, मेरा हम लोग जो गाना बनाए थे फीफा वर्ल्ड कप के लिए, दैट हैड गॉन टू कोका कोला, दैट वाज द स्पॉन्सर ऑफ फीफा। सो कोक हैड हर्ड इट एंड इट हैड गॉन टू फीफा ऑल्सो, एंड दे हैड ऑफिशियली सेड कि ये दिस कैन बी वन ऑफ द एंथम्स। 12-13 एंथम्स बहुत लोगों ने बनाए थे। एट दैट टाइम वो शकीरा वाला जो था वो बहुत मशहूर हुआ था, वाका वाका। But in that same series, our song, which was called Africa You're the Star, was also one of the official anthems. They got an email from FIFA. How did he locate you guys? That guy, he was an Indian guy. He was an Indian. So he located me. Oh wow! And then I said, okay, I want to work with African artists. So that was my vision. I wanted to work with them. It was an English song, so I did that. We did the song, and Loyiso Bala got a slot just before Black Eyed Peas. Oh, okay. And Black Eyed Peas के बाद में Alicia Keys थी. So पूरा opening ceremony के lineup में Loyiso Bala was on the main stage, and that's where he invited me and Suleiman to perform. अभी मैंने of course performances किए थे मैंने दूसरे Indian artists के साथ, जाकिर साहब के साथ, all that. But as an individual singing and like doing my own song in front of 90,000 people in Johannesburg. अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या हुआ था
कि हम लोग ने कह दिया था कि हम लोग जा रहे हैं. मैं इंडियन आइडल भी कर रहा था उस सीजन, तो मैंने इंडियन आइडल में भी कह दिया था कि आई एम गोइंग फॉर फीफा वर्ल्ड कप, आई एम गोइंग टू परफॉर्म, ब्ला ब्ला ब्ला. इस तरह की चर्चा हो गई थी. अभी मैं वहां पे परफॉर्म कर रहा हूँ. आप सोचो, इंडिया ने ही पार्टिसिपेट किया था फीफा वर्ल्ड कप में, लेकिन मैं क्राउड में तिरंगा देख रहा हूँ. नाउ ऑब्वियसली द तिरंगा इज फॉर अस, टू सपोर्ट अस, मी एंड सुलेमान, बिकॉज लाइक इंडिया वाज नॉट लाइक पार्टिसिपेटिंग इन फीफा. तो वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई, एंड दैट फीलिंग आई कैन नॉट एक्सप्रेस, एंड दैट जॉय, दैट हाई ऑफ सीइंग 90,000 पीपल, you know, singing your song and cheering you. उसमें कुछ Indians दिख रहे थे with तिरंगा. That gave me a different kind of kick. I went back to the room that night, called Neerav, said, let's do shows. Let's do concerts. 2010. Let's do shows. उसके बाद मैं इतना busy हो गया doing concerts, doing shows. I started figuring out different ways to, you know, project your voice. As a singer, studio में आपकी technique एक type की होती है, but you know, live on stage, you know, and I've not learned singing or anything like that. You know, I've learned music as a musician, as a keyboardist, as a pianist, as, you know, and I never ever thought that I'll be on stage singing my own songs. Coming back to what I just said, I never planned anything. These days I do 100 shows. This year we're going to do 100 concerts. We just performed at Sydney Opera House. I can't believe I'm living my dream. Films एक अपनी जगह होती है, उसकी एक अलग रौनक होती है. But, you know, being on stage, singing your songs, seeing people smile, cry to all your emotions, different level, yeah. वो energy. When you go to Sydney Opera House and you see a whole packed audience, it's a different feeling. Yeah, absolutely. But I'm just wondering now, since when you were doing background, and there used to be a lot of parts where we used to hear your vocals, and so and you know it used to just be like a signature thing, you know, and it used to be those parts would be very soulful, and you know, you were doing all that kind of stuff. So when you were learning music growing up, what was your training, and what were your earlier influences, or was there something that would always catch your attention, or some artist that would always catch your attention in some way? I have my heroes. I used to always love Michael Jackson, my biggest hero. Madan Mohan, my biggest hero in India. All the songs, Lag Ja Gale, Rasme Ulfat. My dad used to play those songs, and मैं कहता था क्या गाने हैं. मतलब मैंने बचपन से How old were you? Attracted. How old? 5, 6, 7. Like what is your earliest Harmonium. Started with introduction? harmonium. Then piano. Like you had a tutor or something? फादर से ही सीखता था Father पहले. से ही सीख रहे थे. फिर खुद करने लग गया था. फिर भारतीय विद्या भवन करके एक इंस्टीट्यूट थी चौपाटी पे मुंबई में, तो वहाँ जाता था. Wow. फिर पियानो सीखने के लिए मैं मिकी कोरिया के पास गया. Mickey Coria is a fabulous piano teacher. He was basically a clarinet player and also played violin, but amazing piano. So he taught me arrangements, like, you know, experimenting with chord changes and on classics. Yeah, so basically I would learn some classical pieces, you know, some standards like Autumn Leaves, you know, Speak Softly My Love. ऐसे कुछ गाने जो piano concertos है, कुछ, you know, some were like Mozart pieces, and you know, so I would learn, I would read, I would play. Then but मेरा भारतीय विद्या भवन में मैं रागों की भी तालीम ले रहा था. फिर मेरी मुलाकात हुई दिनशा संजाना से, who was an amazing keyboardist and also technologically really ahead of his time. I first saw an Atari computer there. Okay. You know, I'd never seen a computer, like music being programmed on a computer. What year? This was Atari computer. 89, 90 maybe. My God, computer. 1990, yeah. 89, 90. Oh God. Yeah, I was 16 years old.
Yeah. So it was a long time ago, and then I got attracted to that. Then then Dinsha became he was my guru. I was learning with him. Then at that time I also met Ustad Sultan Khan Sahab, and मैं Khan Sahab का एकदम मतलब चेला बन गया था. I was like really in love with him. How did as you a meet him? person, I got a call one day from Tawfiq Bhai. He said कि यार I was 16 years old or something. 16-17 So साल मतलब का. you must have been in school or just entering college, right? मैं कॉलेज नहीं गया. मैं स्कूल के बाद ना कॉलेज नमस्ते यार. So I studied music. I didn't go so to you college. actually, like, what I'm really wanting to know is, like, when I heard a song like from Qayamat Se Qayamat Tak as a kid, I immediately latched onto it. Like, it was not कि somebody. Which song? It was गज़ब का है दिन सोचो ज़रा. That was the song. So I don't know, something about that song attracted the 3-year-old me. You were 3 years old. Yes, I was 3 years old when the film came out. The music came out, and Very nice, yeah. very quickly I learned to even operate the cassette player, which was baat like. So it was just an attraction, and since I was living in Aurangabad, there was not much exposure to any kind of art or anything. It was whatever Chitrahar. That was the only access to music. So, but somehow I just got so hooked onto this that I was very amazed by its sound. उसमें जो वो जो गिटार जो बजता है riff, it used to just attract me. So, was it by your choice that you started preparing for music learning, or yeah. Nobody told me. What was it that My attracted father you? was, my dad was a composer. Yeah. And then he started manufacturing musical instruments. Okay. Oh, बचपन wow. से हाँ. So he used to make congas, bongos, tambourines, and Like in a proper workshop. workshop. Yeah. So my dad had a business. He helped so many musicians, back in the day. तो मैं बचपन से हम लोग के टॉयज वॉयज नहीं थे. हम लोग के पास ये बोंगो कॉन्गो टैम्बोरिन नहीं थे. हम लोग उससे ही खेलते थे. मतलब that was my life. My started only in this whole mahal. Oh. And then I would one day listen. My dad would play Lag Ja Gale. I was like, wow, क्या गाना है यार. बच छोटा था बहुत. But I would also listen to Michael Jackson. Would you try to imitate क्या गाना हो रहा है, and would you like sing it also? I would try to play it. You would try to play. मैं बजाने का मुझे बहुत शौक था. तब से मैं keyboard is my main instrument. So that was my आपका सब कुछ मेन है, मुझे तो लगता है. नहीं ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं. शुरुआत तो कीबोर्ड से ही हुई थी यार, और फिर उसके बाद मतलब चलता रहा. तो you were like talking totally... about I just want to name this thing. Music for me 50% was listening. 50-60% was listening. I was learning music just by listening at that age, and even now. Right. I don't. हम लोग क्या सीखते क्या अभी आजकल? कहाँ सीखते? हम लोग सुनते ही है. सुन के जो सीखने मिलता है आज तो वही है. अभी आज भी मैं कभी कोई ऐसा कुछ ग्राहक सुनता हूँ कि यार ये क्या है, इसके नोट्स, इसका नशा, इसका ऑरा, तो देन आई लाइक टू फाइंड आउट. फिर मैं गूगल पे जाके मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में. आई ट्राई टू फाइंड आउट, गेट एग्जाम्पल्स ऑफ कि क्या इसको पंडित जसराज ने गाया है, क्या अजय चक्रवर्ती जी ने गाया है, क्या किशोरी ताई ने गाया है. तो मैं सुनता हूँ उसको. सो देन आई फिगर आउट कि इसमें क्या बात है, कैसे बिहाग में तीव्रमा का क्या पड़ाव है, कितना जोर है, कितनी खुशबू है उसकी, और किस तरह से. तो आई एम अ क्यूरियस गाय ब्रो. आई एम अ क्यूरियस गाय. आई वांट टू नो. But not just that. I also now I'm very, very, attracted to how people are, I mean, the new attraction that is really killing me is AI. AI, of course. It's really like attracting me. What do you feel about I'm AI? seeing, it's insane. It's amazing. Like I love AI. I think we. I think it's जब computers आए थे ना, तब इंसान बहुत परेशान था कि अरे यार हमारे jobs चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. Computers will replace humans. It never happened. It can never happen. Human was always the operator. You need humans to command. Although AI is a different thing altogether. It's learning from humans. AI is learning from humans. Doing tasks. And it's going to, and it's replicating, and it's growing very fast. In the next 5 years, they say
that they will stop learning from humans because they would have developed their own database to learn from. AI is right now learning from humans, but after 5 years, they'll have so much learning that they won't need it. They will be That's beyond going to be that. scary. But I'm curious. I want to know what's going to happen. Because see, humans are also evolving. You got to understand that. You know? What is the most amazing thing of AI that you have discovered of late? Because I know that you're a very progressive person. Like you're always into computers and you're always into gear and like to keep it very up to date. यार recently आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और अभी AI यार के बारे देखो में। सब लोग आजकल ना सब लोग स्प्लाइस वाइज यूज कर रहे हैं. Right. सब लोग कर रहे हैं. Right. आपको पता है लाइक देयर आर Do you use Splice? I use it, but I don't use any top lines. Okay. I use single samples and I use sounds from Splice. Okay. And then I import them on serums and then I use my own sounds and stuff. What happens with Splice samples is that when you use Splice samples, then you will see that another 15 people have used the same sample. Matlab if it's a top line. There is a chance of that actually. Oh yeah, if it's a top line, you're pretty sure that if it's a good top line, Yeah. it's a big chance that people will use it. So it doesn't become your own. It's like a sample. Then, Right, you know. exactly. It's fantastic for you to trigger off the idea. But how, AI is a great way to sometimes give a command to ChatGPT. And ask, or there are other, सुनो तो बहुत ही कमाल है. Right. मतलब it's like पूरे making गाने songs वाने right बना now. के दे रहा है. हाँ. Full songs बना या अभी आपको ये आपकी नियत के ऊपर है कि आपको यूज करना है कि नहीं करना है. But at least it gives you a direction. Like, wow, this is like another Yeah, altogether. and even plus with the scanning also वो कुछ अजीब ही scanning देता कई है. बार आप एक गाना बना लो, कमाल का गाना बना लो, and then you ask Suno to give you another song with the same kind of a vibe, and ऐसा हो सकता है कि आपका जो गाना है वो बहुत कमाल है, but कुछ आप सुनो से ले सकते. पिक कर लो तो that can, अभी वो आपकी उसके ऊपर है, नियत के ऊपर है कि आप कैसे. मैंने आज तक तो नहीं किया है, बट मेरी नियत बहुत खराब हुई थी बीच बीच में, बट मैंने आज तक नहीं किया है ये. Because I still want to use my brain and my feelings and my emotions. Sir, where does this need come from? Because I feel there are two types of artists. There's one who wants to like really put in the work, do the music, serve the music, and I want to ऐसा. और कुछ लोगों का ऐसा है कि अरे छोड़ना यार, तो क्यों इतना लोड ले रहा है, मैं +1 गा दे. Two kinds of people. So music, I've always considered as an art. I've not considered as a task. Wow, beautiful. ये बात और है कि आज के दौर में वो टास्क हो चुका है. आप शायद मेरा नाम फिल्मों में नहीं देखेंगे आजकल. Right. नहीं देखेंगे. इसका यही रीजन है. It's become a task. मैं एक सीरीज कर रहा था. Okay, I'm going to name the series also. Forget it. I don't care. I'll tell you the whole story. I was thinking while I was this thing, I'm going to tell you. Okay, so माधुरी दीक्षित जी का एक सीरीज आया था, फेम गेम. Okay. Very interesting story. एक गाना, I think the producer, it was a Dharmatic production, but Dharmatic had gotten one showrunner. Okay. Now, I had no idea. I thought the director, when you do a film, for me it was director and producer. Yeah. But the showrunner is the main guy. Okay. In a series, right? He's running the show. So okay, so now I'm talking to the showrunner, very sweet person, living in New York. The Fame Game का जो ये this thing is based in India. It's Madhuri Dixit ji is the main protagonist. तो एक वो कॉल आया तो बोले कि we've been looking for a great song for this series, and everybody suggested your name because of Aaja Nachle. We want a song like that. Okay. Like Aaja Nachle. I said I'll not be able to make another Aaja Nachle. I can't make it, but I can try. Give आ जाना चले, ये लो. It's a song exactly like आ जाना चले. नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता. But he said नहीं, we want a song which is like a धमाकेदार song. Okay. Madhuri ji's full kind of like dancing number, and it needs to be classy, it needs to be a little folky or whatever. I said okay, cool. So we made a song which I, at that point, it was still COVID going on. 2021 की बात कर रहा हूँ मैं. मतलब चल रहा था, second COVID का वो आया था. अच्छा.
वेव आया था, तो लोग घर पे ही थे. I made a song, a धमाकेदार song. Made a धमाकेदार song. Keeping Madhuri Dixit. Keeping Madhuri and Dixit everything in on mind. mind. Yeah. I called Shraddha Pandit. Okay. She's a very good singer, but she's also writes really well. Right. So I called. I said मेरे को एक गाना बनाना है. ये कुछ ऐसा गाना हो कि जिसमें ना एक पुरानी बात भी हो, like you know, एक फोक टाइप की एक बात हो, एक फिल्म का भी कनेक्शन हो. एंड शी रोट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग दुपट्टा मेरा, मतलब शी रोट अ मुखड़ा, you know, and I had a melody anyway, so she wrote the song to the melody. And then I called Sunidhi, and Sunidhi at that time, she was also, nobody was meeting anybody, but Sunidhi said कि चल यार मिलते, and she came to the studio and she recorded it, and it turned out to be fab. Okay, मैंने ये गाना भेज दिया उसको पसंद नहीं आया. He said The showrunner didn't like it. He said कि यार it's great, but can we have something folky? Okay. I said okay. अभी Sunidhi But according to you, was it folky? Or no, it wasn't that folky. It had become dhamakedar. Okay. But he told me he wants a dhamakedar song only. Okay, धमाकेदार song. पहले you worked according to his first brief. According to his first brief. He said, can we have some folk element? I said, okay. तो ये गाना नहीं चलेगा. फिर मैं दूसरा गाना बनाया. Okay, that Kumar wrote. I sent it to Shreya to sing it. Shreya sang it beautifully. हाँ, ये गाना पसंद आया. तो showrunner को पसंद आ गया. Then went to Karan. Karan told me, Salim, it's good. Everything's fine. Can we have some energy on certain section? Very good, valid, this thing he told me. I said, okay. So we changed and we added some energy in the antras and stuff like that. Okay. Then it went to Madhuri. So now Madhuri called me and she said, Salim, it would be great if we had some Kathak things there. Just you had done, like you had done in Aja Nachle, like Janak. Right. You know that. I said, okay, cool, we'll try. हालांकि ये थोड़ा फोक्सी है, इसमें ज़बरदस्ती लगेगा, but we tried and it worked. फिर गया Netflix पे. मैं सोच रहा हूँ कि कितने लोग इसको अप्रूव करेंगे गाने को यार. When you're making music, it's an art form. Achha, best part is, I'll tell you the whole story. Netflix guys fortunately had nothing to say. They liked it. Okay. It went to Vaibhavi. Now Vaibhavi is going to choreograph it. Yeah. Vaibhavi calls me one day, said, Salim, I want to talk to you. Please call me. It's urgent. मैं phone किया. यार मेरे को गाना पसंद नहीं आया यार. तो बोला भाई, मैं वैभवी और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है. मैं उसको बोला कि यार देख, बहुत लेवल्स से चला गया ये गाना, मतलब इट्स गॉन टू डिफरेंट लेवल्स. अब तू टांग मत अड़ा, लाइक प्लीज जस्ट लाइक लेट्स डू इट. ही सिंग नहीं यार, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मैं कैसे कोरियोग्राफ करूं. ऐसे रवि, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? इसे पता नहीं यार, वाज दिस योर फर्स्ट ड्राफ्ट? आई सेड नो. कैन यू सेंड मी योर फर्स्ट ड्राफ्ट? आई सेड इट्स अ डिफरेंट सॉन्ग वैभवी. शी सेड सेंड मी ना प्लीज. तो मैंने भेजा उसको, व्हिच वाज दुपट्टा मेरा. So she heard दुपट्टा मेरा. She said, ये गाना है, this is it. मैं बोला, बट मैंने पूरा इसका लाइव कोरस वोरस सब कुछ कर लिया है अभी ये फोक वाले का. He said, सलीम, बट गाना तो यही है. अच्छा, बेस्ट पार्ट इज शो रनर के अलावा दुपट्टा मेरा किसी ने नहीं सुना था. क्या वैभवी ने माधुरी को, करण को, सबको कन्विंस कर दिया कि ये गाना है अपना. And I had to rework on the whole thing with Dupatta Mera. I called Shraddha, made her do the antra, called Sunidhi, she sang, ये वो पूरा ताम जाम करके Dupatta Mera is a final song that went through. But in the whole process now, I felt like the whole artistic thing that a composer does or a singer puts in, that was somewhere lost, yeah. इतना मतलब हर चीज को ये वो करके ना, अभी अपनी इंडस्ट्री का ये हो चुका है कि इट गोज थ्रू सो मेनी डिफरेंट लेवल्स राइट नाउ. इन हॉलीवुड आल्सो इज द सेम थिंग ब्रो. राइट. इट जस्ट गोज थ्रू मेनी लेवल्स. बट समवेयर व्हाट हैपेंस इज ना, आई फील द आर्ट, the खुशबू ऑफ द आर्ट फॉर्म, दैट समवेयर गेट्स लॉस्ट. या एक इंस्टिंक्ट, एक ह्यूमन एलिमेंट, कुछ चीजें ऐसी जो खूबसूरत होती है, you know, which is very and because you know you it's not like a report card that it has to be scrutinized by so many people. You know, it's a piece of art that needs to flow like water.
वो कहीं ना कहीं कम हो गया है. So I mean I've said this before also, but I've never explained this whole what happened with me, and that kind of put me back, and I started thinking that काश ऐसा होता कि मुझे याद है जब हम चक दे बना रहे थे और हम लोग ने फिल्म देख ली थी, पूरी फिल्म हो गई थी और उसकी कास्ट एंड क्रू चल रही थी और पिक्चर ख़त्म हो गई और यश जी बाहर चले गए ना. वी वर लाइक वॉरिड कि क्या हो गया. सब लोग मतलब तालियां बजा रहे हैं, कास्ट एंड क्रू चल रहा है. एक हफ्ते में पिक्चर रिलीज़ होने वाली है. यश जी बाहर चले गए. यश जी ने कहा कि बेटा आखिर में गाना चाहिए. जब इंडिया जीत जाती है ना और शाहरुख फ्लैग तिरंगा को देखता है तब गाना चाहिए हमको. तो वहाँ तो पहले बैकग्राउंड स्कोर था, तो अब गाना कैसे बनाएंगे. एक हफ्ते में तो पिक्चर रिलीज है. उसी रात को हम लोग गए. उसी रात को मेरे पास वो गाना था, एक एक तरफ तेरी धड़कन थी, सांसें थी तेरी दूजी और मौला मेरे टूटे ना ये डोर, जो मैंने डोर के लिए बनाया था. एक तरफ तेरी धड़कन थी, सांसें है तेरी दूजी और मौला मेरे टूटे ना ये डोर. ये मैंने डोर के लिए बनाया था जो नहीं गया और ये हौसला वहाँ पे चला गया था. तो मेरे पास ये मेलोडी थी, तो जयदीप ने वहीं पर लिख दिया कि तीजा तेरा रंग था मैं, जिया तेरे ढंग से मैं. तो ऐसी चीज़ें जो होती है ना, वो आई मिस दैट. या नाउ these days I miss that artistic collaborations which happen instantly, which happen with a very pure heart. I think it was very free flowing in अभी lots of लोग ways. खाना क्या मंगाएंगे, let's do this, let's plan, let's Google Sheets. What the hell? I'm a guy who sits on the piano and starts. I mean, like, I don't. That's where the magic happens. It should just be like that. I mean, music should just flow. And that night itself, we finished this melody. Luckily, I had the melody. He wrote the song. But how did it strike you कि मैं ये गाना यहाँ पर use कर लूँगा because of the time factor or did you feel कि ये चला जाएगा इसमें? Honestly, जो background score जब मैंने किया था ना, तो उसमें ये चारुकेशी का एक vibe था. Okay. ये notes थे. जब शाहरुख रोता है, तिरंगा को देख के रोता है और वो मतलब पूरा सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ही इज फीलिंग दैट इमोशन. उसका जो कनेक्शन है विद हिज कंट्री, विद द तिरंगा, दैट फीलिंग. उसमें नोट्स जो थी ना, उसमें ये कोमल दहवत की एक बात थी. एंड बिकॉज इसमें भी ये गाने, ये मेलोडी में है वो, तू ही था मौला तू ही मौला मेरे ले मेरी. सो इट हैज़ दैट एंड आई फेल्ट लाइक यार ये मेलोडी सही रहेगी. और मैं तो मेलोडी चेंज भी कर सकता था. मेरे पास ये 7 मात्रा में ये छंद था. तो इट वाज सपोज्ड टू बी वेरी इमोशनल मोमेंट एट दैट पॉइंट. हाँ, मतलब बिकॉज इन द फिल्म गोज टू द इट आल्सो गोज टू द मोहल्ला, जहाँ पे वो गद्दार वो मिटाते हैं वो, इफ यू रिमेम्बर चक दे का वो आखिर का सीन है. सो ऑल दैट स्टफ रिक्वायर्ड दैट फीलिंग, दैट इमोशन, दैट सिनेमैटिक वाइब, एंड हो गया वो. बट दीज थिंग्स हैपन, यूज्ड टू हैपन. नाउ आई एम श्योर इट हैपेंस, बट मेरे साथ नहीं हुआ है इतना. मैं हाल ही में पिछले 5-6 साल में इट्स बिकम अ टास्क. अभी प्रोड्यूसर को सुना है, फिर डायरेक्टर को सुना रहे, कभी कभार एक्टर के पास जा रहा है गाना, फिर प्लेटफॉर्म पे जा रहा है लाइक नेटफ्लिक्स और व्हाटएवर, Amazon. And a lot of people approving a song and like, giving their what's going on? feedback. Yeah. But I mean, we used to have a very beautiful relationship with a director and producer would just come and bless it कि हाँ अच्छा है, आप लोग, एक ट्रस्ट होता था, बट अभी तो पहली बात तो यार कोई फिल्म आती है तो एक गाना कोई और कर रहा है, एक गाना कोई और, एक गाना ये, एक गाना वो. What's going on? I mean, like that's that's something. And mostly it's not, music is not very social thing. In many studios when we go, it's like a very एक इंसान बैठा है कोई, sometimes there's no composer, sometimes there's only engineer and they are recording, or you have to figure it out कि क्या करना है. That's kind of weird. I don't know. मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है. मेरे हर गाने की रिकॉर्डिंग में I've always been there, especially, I mean, not even just singers, but musicians, whatever it is, I'm always there. It's not for me, it's not a task, yeah, it's art.
Something that ये you love. खुशबू है यार, आप अगर इससे दूर चले जाएंगे ना तो वो आपसे और दूर चले जाएंगी, खुशबू आएगी ही नहीं फिर. नहीं आएगी. तो मुझे तो ये खुशबू मेरे नजदीक रखनी है. I want to keep it for all my life. When you were producing for other composers, music, when you would go as a music producer for other composers, like this is what I've heard, I don't know, but ऐसा बोलते थे कि they used to be 2-3 programmers. Yeah. कभी 2-3 programmers and there's so many musicians. Sure. So at that point, of course, you had your own musicality, you had your own sensibility. Like I've heard about you कि आपके एकदम लंबे बाल and you're like this dude who's like just, you know, Yeah, I mean, the coolest guy in the room. I can't you know, say that, who's- but yeah, thank you. No, but you're still the coolest guy in the room. You're very kind. Yeah, nice. So, you know, you have your own sensibility, music sensibility, and एकदम Bollywood music जो 90s में जो चल रहा था, and of course you must have been feeling कि यार ये इधर मैं ये डाल देता हूँ, you know, let me add a, because you are such a phenomenal music producer कि आपके ideas इतने कमाल हैं and they are so out of the box and so progressive. So how would you, उधर भी एक बंदिश होती थी, did you feel tied down? No. I mean, जिन लोग के लिए भी मैं प्रोग्रामिंग करता था, चाहे वो आदेश श्रीवास्तव हो या अन्नू मलिक हो या इस्माइल दरबार हो या, I used to have a lot of freedom. Very, and you know, because they used to be open कि यार give me some new stuff, like, you know, see, programming में इतने लोग नहीं थे तभी. Right. There were not that many programmers, you know. There were very few people, and programmers. Who were the की programmers बहुत you would keep respect थी. meeting again and again, like on a very Jackie, Sandeep, Sandeep. Tabi. Okay. Then very soon Clinton was another programmer who was on. Clinton on the scene. Cerejo. Yeah, Oh, okay. and you know, and of course there were. I mean, I was very fortunate that when I started programming, my first recording, Kersi Ji was there. It was Kersi Lord. Bazigar, that song. Oh, for Anuji, huh? From KC Lord. Yeah, Kersi Lord. So yeah, there were some, but still there were very few. There were not that many. अभी तो हर तो पर इतने programmers are in one place and there's so many live musicians. So what is the balance कि ये मैं ये इतना बना देता हूँ, तू ये part बना दे कि मैं ये कर लेता हूँ. हाँ, How good question. So क्या होता था कि like introduction, let's say Sandeep would do, Okay. and then Mukhada would do. Ah, Yeah. अच्छा, पूरे What गाने about का the ड्रम sounds? प्रोग्रामिंग सुलेमानी कर रहा है या नितिन शंकर कर Okay. रहा है या चैंग कर रहा है, राम, okay. who very recently expired. Okay. God bless his soul. But yeah, so yeah, like rhythm programmer, but कभी कभार 2 rhythm programmer होते थे, वो लोग अपने and like आपस they में. would do music sections, you know, one guy would do music section, then one guy would do the mukhra. So इतने bars insert कर दिया, 16 bars का intro है for instance, so 16 bars का intro डाल दिया, okay, so 16 feeding चल रहा है. और फिर मैं 17th बार से मेरा मुखड़ा शुरू हो रहा है. Okay. So 17th So you guys were all locked in. yeah, all going through MIDI sync. And one guy would play and the entire song would play. Wow. But Nakash, I've also been through a live recording where nothing was programmed and I'm playing live. अमर हल्दीपुर जी के साथ में मैंने कितने गाने ऐसे, कितने बैकग्राउंड स्कोर्स और गाने ऐसे So you'll have like your different tones loaded Yeah. for different parts of the song. Yeah. You just have to like a Playing show. live, huh? we're playing My live. God. Yeah, live. Playing live, there's live acoustic guitar, there's live bass. I'm playing keys and piano and pads and some leads and things like that. Back then, they used to like in the mix, they would keep the production so low Yeah. and keep the strings and the live stuff very high. Yeah. You could barely even hear bass sometimes. Sure. So, as a music producer, when you're doing this almost on a daily basis, I think it was an everyday thing, right? Like going to the studio. See, bro, 90s was the worst time with music. Worst. You can say that. It was the worst. I don't want to name all the composers and all that, but like, you know, गाने भी ऐसे, मतलब, I'm sorry to say, but But he क्यों था ऐसा? And even plus when Rahman sir had also come, and I think even Viju Shah sir was I think- doing yeah, see, Rahman had brought very in a synthy. very, They had got a synth vibe to their music. yeah. ऐसा कुछ नहीं, he had bought it. I mean, his orchestrations were amazing, Rahman ka. Yeah, He of had course. Done some great live, I mean, like, you know, introduced some amazing live musicians. But
Definitely sonically he brought in a big change. Of course. Big change. It's funny actually at that time, when we had done Bhumi in 98, I had recorded that. He had heard that album. He had asked me, we had a long chat about it. And, I had known him as Dilip at that time. Okay. Before Rahman. There was once I had a concert in Chennai, in Madras. It was called Madras, and Chennai happened later. So I wanted a keyboard, and then Shivamani told me that मैं Kawai K4 एक keyboard था. Okay. तो वो मुझे वो keyboard मांगता था, and then nobody else had that keyboard. And हम लोग का सफर जो था वो ट्रेन में था. The concert was in a band was called Surya. It was Tawfiq Bhai's band, Tawfiq and Fazal Bhai. And so we wanted to, I could only carry one keyboard, which was D50. Okay. And Roland D50. And my other keyboard was Kawai K4. And he said that, you can get it. Dilip, my friend, has it. So I got it from Dilip, who's now Rahman. So anyway, that time, we were not in touch that much, but we had both heard of each other at that time. So, but anyway, speaking about AR has always been a phenomenal change in everyone's in the music industry, and he had brought in that big change in the 90s. But I'm talking about the early 90s, na? Right. Things were pretty sad, musically. But I think many people say that it was worse in the 80s and then it got I think better in the 90s. still or had something. its charm. Like, I feel the disco scene में कुछ एक बात थी यार, like Bapilari. There was still some progress Yeah, in it. शराबी और ये सब Right. कुछ चीजें अच्छी हुई थी, मतलब, पंचमदा भी, आखिर में रामा वो फिल्म उन्होंने की थी. I think that was, of course, not the best what R.D. Burman ji could have, but I think 80s still had a charm of its own, But I think Sargam वगैरह 80s में ही हुई थी ना, late 80s में, yeah. Lakshmikant Pyarelal ji were like, They were though always killing it. Yeah. But 90s was a funny era. Like, I don't want to name people, but like 90s was a little dodgy. Yeah. Then from 2000 onwards, things became amazing. I think. Rahman's magic started happening. Fortunately, Shankar Ehsaan Loy happened. Vishal Shekhar happened. We got to do some stuff. Pritam was shining like crazy. Pritam's a hit machine. He's been at it. So there's some good stuff. Mithun did some cool things. Yeah. Amit Trivedi happened. 2000 se things have been a little... But what do you think is the reason for that transition to happen? Because suddenly I am listening to a Jatin Lalit song from a movie called Fana. And it sounds magnificent. It suddenly just becomes like it goes to another level. I think that I must say that it's, although you're being very kind, like Suleiman and me were part of that project, but it's also because Kunal Kohli and Aditya Chopra wanted Jatin Lalit to have a different sound. Okay. So was it's that their like vision. a conscious discussion? हाँ. Guys, Yeah. कुछ करते हैं हम लोग. मतलब एक तो it was unheard of. When the song came to me, it was a very different song, obviously, and but we all enjoyed it. There was no flex, there was no ego. Lalit was very cool and easy to give us the full freedom to do whatever. अभी आमिर खान दिल्ली में गा रहा है, तो अभी गाना जब मैंने सुना था तो गिटार पे सुना था, चांद से बारिश जो करता हवा. Obviously it was just a melody in the form of basic thing, but that that theka and whatever, we needed that Delhi ki khushbu, we needed those guitars and yeah, it's a very crazy kind of a fusion. Yeah, it was. Which was so. See, I used to listen a lot to. It's like very. Seems like it's trying to be mute in some way, but it's not opening, and then suddenly it just thanks opens to all from my I used to listen to at that time a lot of Bon Jovi, but we used to also listen to Nusrat Fateh Ali Khan Sahab. So मुझे कव्वाली का बहुत शौक है. So I we try to
like trying to bring in a bit of rock with Qawwali and see, you know. In fact, I'll tell you honestly, there were a couple of bands that were doing that also, you know, that kind of a scene at that time. Very Sufi rock kind of a zone. There was a band from Pakistan, I think. Junoon. Junoon was doing that, yeah. And there were some very cool Indian bands also trying to do things, you know, with this whole Indian sound and guitars and stuff. And it was an interesting sound. Yeah, it was quite Yeah. so refreshing. Euphoria was Because- doing it, you know, Palash Yeah. and all. They were doing some cool stuff. And it was a sound that we wanted this to become a very unique sound and not have a filmy sound, you know. Yeah, because Jatin ji and Lalit ji, they always sounded very close to Panchamda, and you know, even their arrangements. We're all yeah. So when like somebody like a Jatin Lalit comes to you for production, then you kind of think in that direction only, right? Yeah. But No, of no, course, you being I you, think in my direction, You bro. think in that I think in my exactly. direction. That's why I'm saying No, you no. being you. They thought wanted in- us to think in our direction also. It's like मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसा कुछ नहीं था कि there was no ego, there was no flex. They wanted our sound, and we wanted to just be the best for the melody. You know, ultimately music wins, yeah, bro. We are all particles of the same. We are all a jamaat praying, you know, together. We are all one. We are all students. Nobody is bigger than each other. We are trying to make a great song. So that feeling, you know, it doesn't matter whether I'm playing and I'm in command or I'm this thing. I still need people's energy, you know, and I still need like a good smile or a nod from people who are listening also. There were so many people in the room when Suleiman and me were making the music, and everyone was enjoying, and we needed that. So that was great. I a little bit connected to this. When you were programming for other composers, and there used to be a lot of people in that recording room, Yeah, a lot of musicians, yeah. 4 programmers, 5 programmers. Huh. How and when did the transition slowly started happening? That This Salim लोग Suleiman, कम होते गए स्टूडियो में, यार क्या and हो गया, आप ही पूरा गाना प्रोग्राम हाँ, कर रहे हो. ऐसा होने ऐसा लगा कि एक तो सुलेमान और मैं एक थे, मतलब Right. whatever, दोनों भाई थे. तो और मैं मेलोडी करता था और सुलेमान रिदम करता था. कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता था कि यू नो यूज्ड टू कॉल मी एंड सुलेमान ओनली. अच्छा. फिर ऐसा हो गया था कि यू नो लोग कहते थे, एक तो सुलेमान इज माय चाइल्ड, बट लोग कहने लगे थे सलीम सुलेमान. हम लोग ने ये नाम हम अपने अच्छा, आप को आप नहीं लोगों ने दिया. decide नहीं किया. नहीं, हम नहीं दिया. वो सलीम सुलेमान को बुलाते हो सलीम. और जिंगल्स में खास तौर पे, क्योंकि जिंगल्स से छोटा 1-1 मिनट का 30 सेकंड्स का होता था, तो दे यूज्ड टू कॉल मी एंड सुलेमान ओनली. तो आप दोनों ही जगह निपटा के आ गए. हाँ. तो वैसे करते करते फिर गाने में भी कुछ कंपोजर्स है, नाम नहीं लूंगा मैं, जो सोचते थे कि सबको नहीं बुलाते, 2 लोग में काम दो खत्म. लोग में काम हो जाएगा. तो But then you would of course want musicians to come in as per your requirement. नहीं यार, इसमें हम ऐसा ढोलक रिकॉर्ड करना पड़ेगा. मैं और सुलेमान हम लोग पूरे गाने का मॉकअप कर लेते थे. अच्छा. मतलब सुलेमान used to do ढोलक तबला also there. But then there were musicians booked for orchestra. For तो live आप फिर music. you would हम लोग कल्टी finish it आउट. अभी आप लाइव देख लो. मैं 5 घंटे में निकल जाता था. ओह 5 घंटे में गाना कंप्लीट. हाँ, मैं कर लेता था. So you would travel with your setup or Yes, travel with my setup. मेरे सेटअप पे आ जाओ. Yeah. नहीं. Travel with the setup. Travel with my setup. When did you like decide के of course now you are in a duo. So when did you guys collectively decide, or was there anything कि यार हम लोग ने Again, we अभी didn't भूमि decide, कर दी. bro. हम लोग एक जिंगल कर रहे थे एक बार. Right. तो एक स्पेक्ट्रल हार्मनी एक स्टूडियो होता था Of ना, course, सैंटा क्रूज में. तो हम लोग एक जिंगल कर रहे थे कैडबरीज के लिए. Okay. तो वो गाने में बहुत ऑर्केस्ट्रेशंस एंड क्वायर और वो सब था. तो मैंने ऑर्केस्ट्रेशंस अपने आपका ही म्यूजिक कीबोर्ड्स पे, हाँ, और कैडबरीज का था. इट वाज अ बिग कमर्शियल. देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑर्केस्ट्रा एंड क्वायर एंड दिस एंड दैट. अभी स्टूडियो बाजू के स्टूडियो में कुछ एडिट चल रहा था. दैट संजय गुप्ता वाज देयर. सो ही वाज वेरी क्यूरियस कि कौन ये, कि बार बार जब दरवाजा खुलता था तो साउंड वाज वेरी बिग एंड लार्ज एंड ऑर्केस्ट्रल. एंड ही वाज एट दैट टाइम प्लानिंग दिस फिल्म हमेशा, which was with Saif Ali Khan and Kajol. Okay. So he met me, he said कि यार bro, hi, my name is Sanjay, ये वो and yeah, I love your sound and I want you, तुम करेंगे क्या बैकग्राउंड स्कोर मेरी फिल्म का? गाने तो अन्नू कर रहा है. अच्छा. तो ऐसे हाँ.
So that's when it started. So then that was the first Salim Sulaiman film as a background score. But in you 94. आपने उधर ही हाँ बोल दिया कि हाँ करेंगे कि नहीं, हाँ, आप ऐसा स्टोरी लगा। बता दो हमको, यार स्टोरी सुन हम लोग लेंगे। जिंगल्स तो करते ही थे, राइट। और फिल्म्स तो हम लोग प्रोग्रामिंग करते ही थे लोगों के लिए, तो फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर्स भी कर सकते थे हम लोग ने. We could have done it. मतलब जैसे ही वो होता है ना कि कि जैसे वो मीटिंग खत्म हो गई तो अरे वाह क्या बात है यार, फिल्म मिल गई हमको यार, हम यार ऐसा background कर कुछ रहे हैं, नहीं था, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं, मैं excitement नहीं था। नकाश, मैं एक्साइटेड इतना नहीं होता था, बिकॉज आई यूज्ड टू ऑलवेज बिलीव लाइक व्हेनेवर आई गेट सक्सेस ना, I feel like a little uncomfortable. I feel like, okay, now what? After you get What? success or Yeah, after before I get, the opportunity? No, when I get any success now, then I feel that, now what? What next? What next? So first of all, I control myself. I put my feet on the ground and say, okay, it's time to learn more. It's time to, go internal and figure out कि और इसके आगे क्या करना है. So that's why I never got excited with this hi-fi. Hey, फिल्म मिल गई, blah blah blah. कभी नहीं. यार फिल्म मिल गई, मेहनत करनी पड़ेगी, और ऑर्केस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा. It was always a thing like, okay, let's prepare ourselves. Let's do something like, Plan. crazy. Let's do something crazy. I remember very well, हमने भूत का बैकग्राउंड कर लिया था, कंप्लीट हो गई थी. God, that was... पिक्चर कंप्लीट हो गई थी, और मैं ना एक ऐसे ही, मुझे एक दिन शाम को मैंने दूसरी एक फिल्म देखी. It was called Ring. Have you seen the movie Ring? The Japanese movie, but the English version, उसका स्कोर हांस जिमर का था. I saw the whole film. I got shit scared. I was thinking कि ऐसी क्या बात है इस फिल्म में. I mean, of course, the movie is amazingly gripping and very scary. But the best part about the score was there were pockets of score, background score, which could have been there but were not there. Now those parts, and I realized one thing: a good guy who knows what background score is a guy who knows where not to do score. That was That's very Hans. noticeable in Booth also. You know what I did? I called Ramu and I told him, Ramu, let's meet again. I sent him Ring. He saw the movie. He said, I know what you're talking about. हमने इतना म्यूजिक डाला था भूत में. Each time that elevator goes up, na, we used to start these Macaro, Spicaro kind of orchestra. There was a theme. Elevator का एक theme था. Theme बनाया था. सब जगह हमने elevator का theme ही निकाल दिया. We just kept the elevator sound. It was just that. I mean, there were so many parts where जब Urmila Matondkar, when she gets up and she goes down in the kitchen, there's music happening, and she brings water, and she comes up on the staircase, there's music happening. And just when she crosses, you see Manjeet, the ghost, अभी आप इतना अगर म्यूजिक कर दोगे, तो when Manjeet appears, yeah, it just we kept the whole thing quiet. The whole thing quiet. And I'll be honest, I got that idea after seeing Ring. I realized that there's so much of silence in that movie. It's the silence that is scary. It's not the score. So when the score comes in the right place, it should really shine. That's why where not to do music is very important. You should know where not to do music. Everybody knows where to do music, but where not to do is the right thing to know if you're going to be a successful background score composer. नकाश एजिज को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट आपके लिए लाएं और उनसे जानें उनकी लाइफ की जर्नी. तो प्लीज़ like, share and subscribe and keep watching Nakash As Is. Since you learned this as you were going along doing background scores, you learned this aspect, and then suddenly you are now again doing a very commercial movie, and they keep asking, it doesn't matter, Nakash. Then don't you like put a foot down? कि इधर नहीं डालो music. I put my foot down. इधर मत डालो. मैं करता हूँ. I feel most of the time, अगर आप filmmaker से बात करो ना, कि bro, I don't think we should put music. He'll appreciate you and he'll probably listen to you. I really love every project of mine because I put in my 100% in it. 70 minute, that
सीन ना शाहरुख खान का चक दे में, अगर उसमें म्यूजिक डाल देता ना मैं बर्बाद कर देता हूँ. Did they want you to have music there? And did you like There stop them? there was no this thing. It was my call. It was your call. I didn't put any music. Shimit is a very open guy. If I would have told him, Shimit, yeah, let's try this, tone, like abstract, like some drama or something, he would have said, okay, give it to me. But Shah Rukh's performance is so amazing in 70 minutes that you don't need. अब you as a background score guy, you must be thinking, अरे यार मैं कुछ ऐड करता हूँ ना यार, अरे but क्यों? जरूरत ही नहीं है. जरूरत नहीं है. तो फिल्म को समझना, स्क्रीन प्ले समझना, एक्टर की टाइमिंग समझना, ये सब आदमी करते करते सीखता है. मैं भी कोई विद्वान नहीं था, मैं भी करते करते ही सीखा हूँ. आज मैं ये पॉडकास्ट भी करते करते ही सीख रहा हूँ. आदमी करते करते सीखता. एक्चुअली करना बहुत जैसे सोनू निगम कहते हैं, करत की विद्या है. करत की विद्या है. करत की विद्या है. व्हाट डज इट मीन? मतलब करते करते मतलब यू गेट नॉलेज. Okay. विद्या is करत की. You talk about Bhoot, you talk about Chak De. There is one more film जिसका remake actually was remade in Marathi, and me and my partner Sargam, we did that music of that movie, Marathi movie. It was called No Entry. अरे and it opened our eyes to background music in comedy film. When we saw that, how do you approach comedy? Or is it so naturally flowing that आपने इतना म्यूजिक प्रोड्यूस कर दिया है कि सब रियल टाइम में हो जा रहा है कभी कभार? यार ऑनेस्टली मैं सच्ची बताऊं तुमको ना, तो बट कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर. वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर, बिकॉज आप ना जो आदमी की टाइमिंग अगर आप समझ नहीं पाएंगे ना, तो यू विल रूइन द सीन. इवन म्यूजिकली की बात करो, उसमें आपने ऐसे कुछ एक म्यूट ट्रम्पेट का कुछ कुछ एक याद नहीं आ रहा है. It's just but yeah, I mean I felt like मैं sometimes मैं फॉर इंस्टेंस कुछ सीन्स में वो टॉयलेट का फ्लश साउंड होता है ना, मैं वो यूज कर देता हूँ, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी काइंड ऑफ फनी पंक्चुएशंस और व्हाटएवर, बिकॉज समटाइम्स कोई जोक्स के बाद यू नीड पंक्चुएशंस इन मूवीज. समटाइम्स यू एक्सपेक्टेशन होती है. इनफैक्ट वो नहीं करना चाहिए बिकॉज वो बहुत स्टूपिड लगता है. बट अगर आपको करना ही है ना, तो instead of using this twang and this trumpet and whatever, use some sound effects like a glass crash or like a flush sound or like a truck ka horn or something. I don't know. Use some funky crazy sound that just creates an emotion. I mean I always experiment with that. I mean mostly comedy films are very difficult to score because अगर आप एक सीन अच्छा चल रहा है और वो एक्टर की टाइमिंग अच्छी है, तो आप म्यूजिक देके उसको बर्बाद भी कर सकते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट दैट, एंड सेम गोज विद हॉरर फिल्म ऑल्सो. इनफैक्ट थ्रिलर्स एंड स्पोर्ट्स फिल्म्स एंड दिस एंड दैट आर लाइक कंपैरेटिवली easier to do. Nothing is easy. Music is tough, but these films especially are a difficult task. Films has really taught me a lot, and I'm honestly telling you, I'm very fortunate, bhai, because कुछ मूवी जैसे कि रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर. अभी सेल्समैन पे कभी कोई फिल्म बनी ही नहीं है. वी थॉट वील डू अ वेरी फंक वाइब, सो दैट वी केप्ट इट वेरी फंक, बिकॉज जब एक सेल्समैन जब सोचता है ना, जब दिमाग लगाता है कि मैं कैसे बेचूं उसको, कैसे क्या करूं, तो इट्स समटाइम्स ही थिंक्स ऑफ सम विकेड आइडियाज. And what is the kind of music that goes well with that? Wicked में मतलब wicked as in वो fun होता है कि उसमें एक स्माइल भी आती है कि यार ये बेचने से ये हो जाएगा, ये से आदमी का दिमाग जब चलने लगता है ना, और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसको एक अजीब किस्म की खुशी होती है उसको. So funk music has that. It has it has an attitude, it has a lot of it has a lot of smile in it. So I felt like we should go with funk, and because कोई reference था ही नहीं कि सेल्समैन के ऊपर कोई फिल्म बनी नहीं है इसके पहले. So I'm very fortunate that चाहे वो कुर्बान हो, which had an Islamic kind of a background, and fashion, again a very trendy this thing, I've never approached something like that, or a Chak De, which is a sports film.
और ड्रामा लाइक आ जाना चले और म्यूजिकल ड्रामा. सो थिंग्स लाइक दैट, यू नो, आदमी को जब ये ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं तो सीखने बहुत मिला है मुझे. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वाज एबल टू डू थिंग्स लाइक दैट. Now I'm trying to, my experiences, I'm trying to bring it in when I'm making a song for Bhumi, or, you know, just, you know, producing a song for somebody else. You know, and that's also every day a learning process. You know, I'm learning so many new things. Like I recently did a ghazal with Prithvi and Hariharan. Do you feel the need to make it very pure since this, or do you feel कि जैसा मुझे मन कर रहा है वैसा मैं कर? हाँ यार, मैं ऐसा आप नहीं सोचते हो कि यार मैं ना सोचता ज्यादा नहीं हूँ, you know, मैं करता हूँ. तो आप मुझे कह रहे हो कि आप इतना कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि मैं सोचता नहीं हूँ इतना, मैं करता हूँ. बट इसमें इतना, अभी जैसे भूमि फॉर एग्जांपल, बिकॉज आदमी बहुत सोचता है ना, उसमें तो कर नहीं पाता यार. बट उसमें इतना लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स भी है. जैसे आपने, तो ये सब आप कैसे लाइक उसको कमिट करना बहुत जरूरी है. सबसे पहली बात तो मैं कभी भी अब्रॉड जाता हूँ तो आई लव टू वॉच म्यूजिकल्स. यू नो, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अपना शो किस तरह से एक म्यूजिकल की तरह पेश करूँ, यू नो, प्रेजेंट करूँ. तो भूमि वाज ऑलवेज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू लाइक अ लाइव कॉन्सर्ट. यू नो, मुझे, आई लव द स्टेज, और स्टेज का मुझे इश्क बहुत पहले से है. यू नो, सो आई वांटेड टू, आई मीन आई कुड हैव शॉट इट लाइक म्यूजिक वीडियोज ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं म्यूजिशियंस के साथ, यू नो, आर्टिस्ट के साथ में, ऑडियंस के साथ में उसको लाइक अ मल्टी कैम सेटअप शूट करना विद ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स, अमेजिंग लाइट्स, एंड यू नो, ग्रेट. बट टू टेक दोस कॉल्स कि भाई ये लाइट्स ही होना चाहिए, बिकॉज इट्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम योर विजन. थोड़ा तो अभी करते करते आदमी सीख गया ना. मुझे पता है कि यार दीज लाइट्स लुक ग्रेट. यू नो, मैं शोज भी इतने करता हूँ कि मुझे पता है कि यार ये लाइट का ये फील आता है. यू नो, शापीज में ये वाइब आता है, बीबीज में ये वाइब आता है. यू नो, कलर पैलेट्स ऐसे होते हैं, DMX में कंट्रोल कर सकते हो. लेट्स डू टाइम कोड, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट. टेक्नोलॉजिकली तो मेरे को कीड़ा है ही फर्स्टली, एंड आई फील म्यूजिक एंड पिक्चर, audio visual is like one family now, you know. But there's also apart from the logistical requirement, there's also a commercial requirement to it. It has to be commercially viable. Sure. No, I don't people think. मैं सरस्वती को फॉलो करता हूँ, लक्ष्मी आ जाती है. अच्छा. मेरा ये मानना है. हम लोग मैं बहुत खर्चा करता हूँ भूमि में, बहुत खर्चा. I can never recoup it. I'll never be able to recoup it. And you both, like you and Suleiman, both like yeah, we fund it. You fund it. Yeah, we fund. But what if one of you is not feeling कि ये भाई, you know, I don't think we should go this much, कि ऐसा कभी होता है that kind of a. I mean, I think the best thing that happened to me is my brother, because he is completely with me. He's always supporting me. Suleiman एक दो बार मुझे कहा है कि, you know, you think we should continue doing this? I'm like, yeah, we should. And then he doesn't say anything. So it's great. You know, in Salim Suleiman, always, you know, we see you a lot as like the face, or you know, always in the, like in Indian Idol आप जज जा रहे हो. अब भैया देखो, इंडियन आइडल में क्या था कि 3 वोट्स होते हैं, राइट? Okay, right, yeah. अब सुलेमान और मैं ही अगर 2 हो गए, तो फिर 2 तो यहीं पर हो गया ना. तो मैं पहले नहीं करना चाह रहा था अकेला, बट देन ही टोल्ड मी कि नहीं, तू कर, इट्स ओके, यू नो, बिकॉज वी बोथ कैन नॉट बी देयर. एंड द होल आइडिया ऑफ 3 डिफरेंट पीपल ऑन टेलीविजन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट शो. सो इफ सुलेमान एंड मी वुड बी देयर, देन दैट्स 2 पीपल एनीवे. So then how do you decide कि तू कर ले या तू कर ले ऐसा? अभी मैंने आज तक एक भी शो नहीं किया है विदाउट हिम. हम लोग हॉलीडेज भी लेते हैं तो साथ में लेते हैं कि भाई 19 जून से 3 जुलाई तक ब्लैंक कर लेते हैं. अगर बहुत बड़ा शो आया तो फ्लाई कर लेंगे. मैं पेरिस में हूँ, वो लंदन में, हम लोग मुंबई आके वापस चले जाएंगे फैमिली के पास. बट वरना 19 से 4 जुलाई तक वो कर लेते हैं, ब्लैंक कर लेते हैं डेट्स. हॉलीडेज भी साथ में लेते हैं हम लोग. मैं एक भी शो नहीं करता हूँ उसके बिना, हम लोग साथ में ही करते हैं. वी आर ऑलवेज टुगेदर. 2 जिस्म एक जान, सलीम सुलेमान. आप लोगों के लाइव एक्ट का मैं एक बार हिस्सा रह चुका. हाँ, यस, एट BHU, या. एंड आई वाज
so amazed at the quality. Of course, it's not something to be surprised. You're very kind, But live is a different ball game Yeah, altogether, it is. and to get that sound onto the stage is a very big challenge, and to get that perfection also. It's not really. I mean, okay, anyway. The sound wise, Yeah. actually, because many singers don't produce and they don't arrange, and they have absolutely no idea about Yeah, that's how true. to work a song on Logic, or even what layers will be needed. Yeah. And plus now they're getting like 5 musicians, 6 musicians, and उसमें अपने को करना है. Correct. When you got your first show, जो आपने वो अफ्रीका के फीफा के बाद में, when you started planning your own show, हाँ. what was like your Luckily- vision like? Luckily, honestly, Nakash, I've had a really good band right from the very Great beginning. musicians, Some Nigel, really good Darshan, band. and- Yeah, some really cool musicians. They've been with me for the past 15 years now, bro. Darshan It's a and all long from time. that time only. Yeah, it's a long time. 15 साल हो गए यार. एक दो इधर चेंज हुए हैं ऐसा. Rushad, my bass player, stopped playing now, so we've got Ralph. Ralph Menezes, yeah. But my musicians have been the same. So there is a great synergy. Even when I'm changing my chords now, they know that I'm going here. So you change it? Do you jam Arrangements? a lot? Yeah. No. You All actually, it's very fixed specific, na? arrangements. Very fixed arrangements. Yeah. No one plays whatever. I'm saying if I ever approach a new song, जब एक नया गाना आया, ये गाना डालते यार अपने सेट में, एक भूमि का, अभी हम लोग क्या SS लाइव में, सलीम सुलेमान लाइव में हम लोग भूमि के गाने बहुत परफॉर्म कर रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ गाने बड़े हो गए हम लोग, जैसे कि छैला है, सुनिधि श्रेया का गाना, जान ले गई है वो, God, these two are like two, three songs deadly अभी colleges में, collaborations. हाँ, colleges में क्या होता है कि हम लोग, people are asking for those songs now, so it's great for me, क्योंकि मैं अगर शुक्राना अल्लाह गा रहा हूँ और मर जावा गा रहा हूँ और ये सब कर रहे हैं हम लोग, और उसके बीच में public is asking for छैला or for जान ले गई, it's a great feeling for me. So we started doing these songs. So like हम लोग So, जब but earlier when you like released these songs of Bhumi, and you of course you have your discography of Bollywood, so you're performing those songs. yeah Now Bhumi is something that is so close to you, yeah right? It's a very personal thing. Yeah. So why didn't you feel like incorporating, or that thought never crossed your mind कि यार I can probably promote these, क्योंकि Bollywood has a different platform altogether, but this you're doing on your own, Bhumi. यार ऑडियंस ना, they don't care यार whether you're playing a Bollywood song or you're playing a non-Bollywood song, ऐसा कुछ नहीं है. ये लोग म्यूजिक सुनने आ रहे हैं यार. Right. उनको पता भी नहीं होता है कि अगर मैं अगर छैला या जान ले गई कुछ बजाऊंगा या कोई भी भूमि का गाना बजाऊंगा, उनको थोड़ी पता है कि यार ये, बट मैं कह देता हूँ कि दिस सॉन्ग इज फ्रॉम भूमि, एंड दे आर एक्चुअली एक्साइटेड. So you're doing this integration from the beginning only. कि मतलब Not from the जैसे- beginning, not from the beginning. My first वही मैं season, जानना चाह रहा हूँ, why you were not so doing भूमि की फर्स्ट सीजन ना, वो उसमें 2020 में मैं किया था. फिर सेकंड सीजन में एक बहुत 2020 में उसमें एक गाना था जिंदा दिली जो अरिजीत ने अरे गाया था. कोड़ा सॉन्ग. तो वो मैं शुरू कर दिया था. अच्छा, you were performing that. I was performing that. But of course 22 तक तो कोविड चल रहा था नकाश. Right. 22 से की एंड से ही शुरू हुआ है कॉन्सर्ट्स. सो 21 में घर आना आया था. That song was also very popular, जो सुनिधि ने गाया था. तो हर सीजन में ना ऐसे कुछ दो तीन गाने निकल गए थे. जैसे 2022 में एक सलाम करके एक गाना था, that had become very big, which was then 23 में मंजूर है which Arman had sung. 24 में of course there were 2-3. So हर भूमि की सीजन में ना 2-3 गाने ऐसे चमक गए थे. So I started performing them in my shows, and people used to love it. Yeah, they're good songs. Because they're I'm fantastic singing songs. कुर्बा हुआ, I'm singing एवी लुट गया, ये सब इसके बीच में एक अच्छा it's a breath of fresh air, so the band also feels good because कुछ नया material है बजाने के लिए, because they've been playing these songs for 10-15 years now, and suddenly we are playing a छैला or a जान ले गई, or so it's great material. The audience loves it, because they know the songs, so these songs have become popular, so they know it. No, something like a Chhela or Jaan Le Gayi. Now, when you are trying to get two crazy artists together,
you know, crazy artists who are like probably, you know, कि वो लोग साथ में आ जाएंगे तो धरती फट जाएगी, you know, इतना खतरनाक कुछ बन जाएगा. Is that what drives you to make a नहीं यार, to make that song, और कि गाना बन गया and let's get Sunidhi and Shreya on board? मैंने उनकी फोटो देख ली थी इंस्टाग्राम पे, दोनों ने पिक्चर लगा दी थी कि whatever, something like that. And then I think उसमें वो इंस्टाग्राम पोस्ट में ना जोनीता ने कमेंट किया था कि कोलैब सून ? Oh, मैंने पकड़ लिया. yes. तो मैंने उसी दिन फोन किया श्रेया को कि मैं बोला कि यार आई वांट टू डू अ सॉन्ग फॉर. She said, you know how Shreya is? करते ना, हाँ. करते ना. तो मैं सुनिधि को भी बोला हाँ. She said of course. Then I wrote a song, and I wrote a song and I called them, and they heard it and they were like, It's crazy. it's okay. कुछ धमाल करते. मैंने कोई सीरियस गाना बनाया था. अच्छा, made a serious okay, okay. They said नहीं यार कुछ धमाल. तो श्रेया को बहुत पसंद आया था. सुनिधि wanted a धमाल song. सुनिधि being Sunidhi. So I said okay. तो मैं बोला एक ऐसा गाना करते that you both are. I suddenly thought of that whole idea of Michael Jackson and Paul McCartney. The Girl Is Mine. If you heard that song. Michael Jackson did Paul McCartney. did a collaboration with Paul McCartney, and he called the song "The Girl Is Mine." Both guys are fighting for that girl. Okay. He's saying that girl is mine, saying girl is mine. It's a beautiful song. And I was like, wow, it's great. What if I bring a fictitious person, between them that they both like? कि ये तो मुझसे बात करता है हर दिन, फिर तुझसे क्या बोलता है? वो बोलती है, वो लड़की कहती है कि ये तो मेरा है तेरा नहीं है, लगता है तुमको मालूम नहीं है, छैला है छैला, रोम रोम में फैला, से कर दिया मुझको पागल, इश्क जैसे मेरा पहला, and that kind of stuff. So again Shraddha written this song beautifully, very difficult song to crack. छैला. So छैला means dude, छैला means lover, छैला means, तो पुराना लफ्ज है लेकिन एक नया वाइब है गाने में. And they both loved it, and I was like, yeah, cool. मेरा कोई सर धरती कोई फटा नहीं. I have a great time, I made the song, they loved it. It was fun watching them. Shreya was dubbing and Sunidhi was asking her to, Shreya, try this now. And yeah, they tried so many new things. They were doing some cool things they were doing, and really, like it was fun. Raj, who works with me, had done a beautiful mock-up. Crazy guy. Yeah. So he had already set up the vocal parts for them and stuff like that. And I mean, I had made the basic melody and some harmonies and parts, but he had done some other cool lines for them. You put out these videos. I have seen the making of these keep videos, doing and these it feels very sad. Why is it not long? Maybe you can have those 10-hour videos, on YouTube, because that allows it. So मैं थोड़ा इस मामले में थोड़ा वो हूँ यार, मैं इतना नहीं कर सकता. मैं उससे 10 घंटे में गाना बना लूँ और एक यार, BTS कौन डालेगा यार? Come on. But we actually, when we are watching something which comes from your studio. यार honestly, I mean ये आपकी अच्छाई है, but मैं ना बहुत ही मतलब I'm a very hyper guy. I like to do things fast. I like to do I've made songs like really fast. Like Hole Hole, for instance, we had made it in one day. एक दिन में बना दिया था हम लोग ने. मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ और मुझे मजा आता है. मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार ना टाइम बहुत होता है ना अपने पास, तो गाना एक्चुअली किधर जाता ही नहीं है. टाइम कम होता है ना तो जल्दी बन जाता है, अच्छा बन जाता है. ऐसा मैं सोचता हूँ. तो ऐसा ये जब आप किसी और को देख रहा है कि बहुत टाइम लगा रहा है यार, 2 महीने से तू यही गाना कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर वर्किंग. नहीं, मैं किसको जज नहीं करता हूँ नकाश, क्योंकि सबकी अपनी एक स्टाइल होती है. नो, बट एक अपना पर्सनल फीलिंग होता है ना कुछ कि यार तू फास्ट कर ले थोड़ा, इतना जरूरी नहीं है. कभी ऐसा बोलने का मन तो करता होगा बिकॉज यूर. पर मैं किसी के साथ मतलब आई एम डूइंग इट माई सेल्फ ओनली ना. मैं ऐसा आई डू एवरीथिंग माई सेल्फ. That's actually you're like the Elon Musk of नहीं ऐसा कुछ नहीं है. artists. No, I have a great team, like of course Suleiman and Raj and Shivansh, and I have like a beautiful team, but I'm a workaholic and I'm a control freak. I love to do it myself. I always find your process, like whatever very little I have had the chance to work with you on something, and at that point also I was more worried about the performance anxiety होती है एक. So I had that, so उस time पे I couldn't really, but what I noticed was you have a lot of structure in your things.
You're a very structured person. Yeah, I could sense that. Yeah, I'm very Is this something that was by default in your nature or something that you build over the years? अगर बहुत कुछ करना है ना आपको तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना पड़ता है, मतलब you know. How does one learn to structure, or how does one? I And think, if you see somebody who's not like that, like for instance, I know, like first when I walked into this, I know I was 45 minutes late. You know, I told you I'll be here at 7:30, and I came here at 8:15, and I was feeling really bad about it because I'm structured. Because I know that after I finish this, I have to do something else. right? So, I don't want to take your time too much. And then I don't want to, I also want to finish my thing before I shut my eyes tonight. So I'm structured like that. Like, अभी वो चीज़ करने में मुझे शायद 2 घंटे नहीं, शायद 3 घंटे लग जाए, वो ठीक है. बट मुझे करना ज़रूर है. मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं घर जाऊँगा और फिर मैं कुछ और देखूँगा. I can't do that. So I'm very structured like that. Like I know I sleep by. मुझे नींद में कितना भी कोशिश कर लूँ, मुझे 3 बजे के पहले नींद नहीं आएगी. और मैं कुछ भी कर लूँ ना, तो मैं सुबह 7 बजे भी उठ जाऊँ ना, मैं 10:30 11 के पहले कुछ कर ही नहीं पाऊँगा. तो मेरा है वैसा एक क्लॉक. You start, so you like noted all these things. Yeah. So you note things कि ये मेरा चल रहा है, ऐसा चल रहा है. So I might as well plan things Yeah, so I accordingly. structure my day accordingly. I structure my things accordingly. Like I know for Bhumi, I need to do this, I need to do that. I need to have a meeting with my lighting guy. I need to have a meeting with my camera guys and this and that. So it's all structured in my head. I'll do it. So, I but make notes. at that point, if you are sitting with somebody and you want to brief somebody about something, and if you're not in that frame of mind, does that irritate you, or does that make you like some ऐसा कुछ? No, I bring myself in the frame of mind. This is my life. It's not my job. Music is not my job. It's my life. I don't do anything else. This is who I am. और मैं कुछ करता ही नहीं हूँ. मुझे कुछ आते ही नहीं और करना. I only do music. That's But it. you have built such crazy sets, and But that's all reflections of music only. Like it's all part of my, it's all one. I don't think it's different. It's all one. Even my record label thing is like I always wanted to release music without any fear कि इसकी streams कितने हो गए. अच्छा इसकी Instagram तो followers ही नहीं है, 16,000 follower है खाली, कहाँ इसको मिलेगा कोई. तू क्या हुआ, बंदा कितना अच्छा गा रहा है यार, क्या गाता है ये, छोड़ना 16,000, मैं इसको कोलैबोरेट करूंगा इसके साथ, मैं इसकी फीड पे आऊंगा. I want to be part of people's lives. I want them to be part of my life. I want to build a community. I hate the word industry. I love the word community. जितना आप दोगे ना, उतना आप पाओगे. So it's not always business, यार. This music is an art first. Let's feel it. Let's build that. There's somebody who's making a ghazal, scared whether somebody who's making instrumental music, doesn't know where it's going to go. I want to be part of that person's life. And come, we'll distribute your music, we'll release it, we'll market it. That's what Merchant Records is. It's an artistic label, yeah. We have no fear. It's incredible that you are doing it, and I think many people are following that. I'm not those I'm not footsteps. making a very big, मैं बहुत कुछ मतलब वो कोई मसीहा की तरह नहीं हूँ. मुझे लगता है कि ये सब तो ज़रूरी है actually. It should be done. If I have a label, then why not have all kinds of colors on it, yeah? Why not? I love Kashmiri music. I love Kashmiri singers. I love the traditions in Kashmir. तो मुझे बहुत पसंद है वो. अब वो म्यूजिक कोई सुनता नहीं है, कोई उसको पसंद नहीं आता या किसी को समझ नहीं आता. That's their problem. I love it. I want to release it. So might as well. So I'm having a great time, bhai. I can tell you, कल को if I shut my eyes forever, I'm fine. I have already completed my job. I've fulfilled my plan in my life. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. मैं already जी रहा हूँ
जो मेरा सपना था ना वो मैं जी रहा हूँ. सपना देखा ही नहीं था वो अलग बात है, बट ये सपना ही है मेरे लिए, मैं जी रहा हूँ ये. So that's I'm like in a very comfortable situation. माशाल्लाह. इसके लिए जब आपका कॉल आया, like I'm coming. I just told you. Thank you. There's no drama. I'm like, I don't want to have any drama. This is called Never Have I Ever. Okay. It's just yeah. our team has Go for it. curated some. Mm-hmm. Never have I ever composed a song in under an hour. I have. I have composed. I'm sure you composed too many. No, not too many. Hole Hole was a song we composed under an hour. Yeah. That experience, like as a composer, now you're doing composing for films. Your YRF is at the helm of the production, and Shah Rukh Khan is the hero. How does the mind, like comply with this in that यार situation? मैं सब नहीं प्रेशर वेशर बिल्कुल नहीं. हाँ ये सब. आप बस मैं गाने बना के ले आऊंगा. हाँ यार ये लोग गाने. मेरे को एक हम लोग माधुरी दीक्षित के लिए बना रहे थे ना ये कि आजा नच ले, ये माधुरी दीक्षित कमबैक फिल्म है. सो ऐसे तो क्या करूँ मैं, गाना बनाऊँ कि प्रेशर लूँ? वाओ, कमाल है यार. I mean गाना बनाते ना यार, बेस्ट प्रेशर ये सब. मैं नहीं सुनता हूँ ये सब, मैं अपना करता हूँ. just keep the noise away. Keep the noise away. And the music flow. Yes, and that the first song I made for Aja Nachle was Ore Piya, and that's because I cut out all the noise. I didn't want to know. Luckily, it wasn't a female song. It wasn't Madhuri Dixit's song. It was her guru's song. Like it was going to be filmed on her guru. So it was and we made it very fast. It was a breeze. गाने में यार वो ये प्रॉब्लम यही है. आई थिंक फिल्म्स ना जस्ट आपको इतना वो कर देता है ना, मतलब जस्ट लाइक आपको घेर लेता है एकदम कि यार ये अल्टीमेटली मेक अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. कभी किसी ने आपको ऐसा पूछ लिया, अरे like if you are very excited about an idea, you made a song, you had a meeting with the team and you just went quickly, you made a song कि भाई कुछ let's lay down something, and you send an idea just to get a feel from the opposite side कि कैसा लग रहा है, what do you think? ऐसा कभी you would have done if you have done. So सामने कभी बोला है कि अरे इतना जल्दी बना लिया? like बहुत बार हुआ है ऐसा. Can't believe कि इतना जल्दी हो गया. कुछ तो प्रॉब्लम होगा. हुआ है. तो ऐसे हाँ तो बताओ प्रॉब्लम क्या है. बट इट्स ओके. आई मीन मतलब पार्ट एंड पार्सल. हाँ मतलब ये होता है यार. मैं ना इंसान को इतना वो नहीं करता हूँ. मतलब एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग एंड so I don't judge people so much. Like everybody has a right to be a certain way. Absolutely. I'm just happy that I am a certain type, so I follow that. Never have I ever disagreed with Suleiman on a song idea. अरे भाई कहाँ हो तुम? We start only with a disagreement. क्या है यार? It starts only like that. मैं सुलेमान पहले मेरे को क्या बना रहा है यार? क्या है यार? नहीं यार. It starts only like that. But that's great because I feel if he wasn't there, then I would have not had that. You need that bouncing board, yeah. Of course, I totally relate to it. You need that, yeah. You see how things go, yeah. But it's always so fascinating to see both of you. मतलब खुशी होती है देख के आप दोनों को. And I always felt like Suleiman bhai is like अपना वो अलग. He's a very chilled guy. अलग चलते रहता है. I'm very hyper. Never have I ever written a song inspired by a personal heartbreak. Of course, I've composed songs with personal heartbreaks. I've had a couple of them. Back in like college or something? Or? Yeah. Back in school, bro. School. Oh, अरे बाप रे. Yeah. Do you remember those songs? नहीं यार, I don't remember. मतलब lyrics के साथ में did you like sing it also? नहीं, they were just melodies. मैं lyrics में बड़ा कच्चा हूँ यार. Hook, I'm a hooker. Like sorry, I just make a hook. Yeah, I don't. I don't really write that well. I mean, I just write maybe a hook or something like that. So when you composed this song, did you compose it on a piano? It's a It was a melody. I can't remember now, but yeah. Oh, wow. Sir, please record करके आप अभी कहाँ है? बता देना. But हाँ बहुत उसके अच्छा बाद लगेगा. में like
बच्चू You सलीम know, honestly का गाना speaking, बहुत सारे सुनने का। गाने ऐसे जो बने हैं कुछ, जैसे कि दरमिया, कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया, ये गाना था. Even though I didn't have a heartbreak, I was all, see, heartbreaks are very good for an artist because you reminisce, you're always reminiscing a past memory when you're making songs like that. I remember while making Darmiya, I was reminiscing a heartbreak which had happened some time ago, many years ago. बट वो दरमिया, वो गाना बड़ा खूबसूरत था, बड़ा सटल भी है, सिंपल है, अच्छा है, यू नो, मेलोडियस है गाना. और कुछ तो था, लफ्ज़ों से था जो परे, खालीपन को भरे, कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया. तो आप मतलब एकदम उस जोन में जाके हाँ, जोन में नहीं गया था, बट वाइल मेकिंग एक फीलिंग आई थी पास्ट मेमोरी की. इट क्रिएट्स दैट इमोशन. हर आर्टिस्ट में ये वो हार्ट ब्रेक तो होता ही है, और वो बहुत काम करता है, वो ज़रूरी है बहुत. बिखरे नहीं तो कैसे निखरोगे, राइट? ज़रूरी है. बिखरे नहीं तो कैसे निखरोगे, उलझे नहीं तो कैसे सुलझोगे. It's important to be broken so that you can rise. Never have I ever wanted to scrap a song that later became a hit. कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बिल्कुल लग नहीं रहा था, बट डायरेक्टर वो बोल रहे कि बहुत अच्छा गाना है, बट आप को लगा कुछ बेटर हो सकता है ऐसा? खुदाया वे, खुदाया वे, बहुत ही अच्छा गाना है ये तो. स्क्रैप होने वाला था गाना आपसे ही? हाँ, मैंने स्क्रैप कर दिया था एक्चुअली. मैंने ये गाना बनाया था फॉर कुर्बान. तो पहले करण ने स्क्रैप कर दिया है गाना, फिर मैंने शुक्राना ला बनाया, तो वो गाना चला गया. फिर ये खुदाया वे मेरे पास था, तो मैं इसको स्क्रैप करने वाला था, मतलब बोला क्या है, कुछ नहीं है गाना. फिर सोहम की दूसरी फिल्म थी, वो तौबा इश्क अपना काल वो कर डायरेक्ट किया था सोहम शाह, तो उसकी दूसरी फिल्म थी ये लक. तो उसको मैंने सुनाया गाना. बहुत पता नहीं क्यों सुनाया, मुझे खुद को पसंद नहीं था इतना, बट सुनाया उसको एक्चुअली ही वाज वेरी इंट्रीग्ड, इसलिए कि यार तू कुर्बान में कितने बनाया गाना शुक्राना ला के लिए. वो बोला मैं 2 ही बनाया था यार, एक नहीं पसंद आया था करण को, फिर ये बनाया तो ये पसंद आ गया उसको, शुक्राना ला. वो सुना ना, बोला नहीं मेरे को पसंद नहीं. आई टोल्ड हिम मुझे नहीं पसंद. ऐसे सुनाना यार, तो आई प्लेड इट टू हिम, ही सेड यार मेरे को बहुत पसंद है, करना है गाना. So then we did it. But that's a very crazy way somebody approached you for a song कि तूने नहीं, आई वॉज डूइंग द मूवी. मैंने गाना बना लिया था, एक आजमा लक करके गाना बना लिया था, जो श्रुति हसन और सुखविंदर ने गाया था. वी मेड दैट सॉन्ग. इस फिल्म में और 1-2 गाने भी थे, वो भी कर दिए थे हमने. फिर एक रोमांटिक गाना करना था, तो ये बात आई. इसी गाने के लिरिक्स क्या थे ना, परदेसी रे आजा रे आजा मेरे देश रे, परदेसी रे, ये थे लिरिक्स उसके. फिर उसको शब्बीर ने लिखा था, शब्बीर अहमद ने, खुदाया वे, ये रिटन दिस. सो देन बट आई वाज लाइक ठीक है यार, ये गाना कुछ अच्छा हो सकता है इससे बेटर. आई वाज ओनली स्क्रैपिंग इट, बट देन इट वेंट थ्रू एनीवे. Never have I ever been forgotten the lyrics while performing No, live. I've never forgotten my lyrics. Never. 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 Actually वो तो मैंने देखा ही है एकदम. आपका इतना सिस्टमैटिक शो भाई है. क्यों ना, क्योंकि गाने में ये सब गाने ना मैं खुद बनाया हूँ. सो मैंने गाने को जिया है, लाइक यू नो, सब गानों को इतनी बार गाया है बिफोर कोई सिंगर. मगर मेरा भी गाना नहीं है ना, वो तो कोई सिंगर आया, बट मैंने इसको इतनी बार गाया है. Never have I ever been starstruck while working with a global artist. No, I've never been. For me, it's the song is a star. It's never been a person. Music is always bigger than anything for me. It's always a song. Do you think it's very important, or do you think it would be so beautiful if all, it's not a possibility वैसे realistically, but how would you have liked senior musicians to approach, or people who are doing very well in musically or career wise to approach the new artists, or how do you, आप तो बहुत ही
किसी को भी, I also recently saw you collaborated with Anandi Hira. I think they came to your studio. Yeah. Right? Yeah. So ये जो आप में चीज है कि आप एक करते हो, डू यू फील दैट इज मिसिंग विद मेनी पीपल दीज डेज कि नहीं कर रहे हैं? मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, मैं जज नहीं करता हूँ किसी को। मैं अपना काम करता हूँ। मुझे बहुत मन होता है कि मैं कोई आर्टिस्ट को सुनता हूँ, कोई नई कोई आवाज़ सुनता हूँ, किसी में कोई टैलेंट होता है जिसको पुश करना होता है, मुझे लगता है कि यार तो मैं कर लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मुझे किसी ने बताया था कि, और ये मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि हैप्पीनेस इज बेस्ट फेल्ट व्हेन यू गिव हैप्पीनेस टू अदर पीपल। व्हेन यू गिव हैप्पीनेस टू अदर पीपल, एक अंदरूनी अजीब खुशी मिलती है आपको जब आप दूसरों को खुश करते हो ना। तो मैं उसी खुशी से जीता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। I love that. वही मेरा नशा है। और मतलब आपका म्यूजिक सुन के we also feel very happy. I think that very kind, really yeah. translates. I'm a student for life. I don't consider myself anything. I have just in the process. मेरा मोटो, जिंदगी का मोटो है ना, is work in progress. Work in progress. It's always work in progress. The minute you feel like अरे यार मैंने ये पा लिया है कुछ, अभी मैंने कर लिया है, game over, bro. I'm not like I don't listen to so many podcasts. I don't listen to people so much. I just listen to my own self, I feel there's a universe inside us, and this is not me saying it, it's Imam Ali's kalam, that there's a whole universe inside you, Whatever you feel, whatever there is, you keep looking, everything is inside you. All your illness is from you. And the remedy of that illness is also within you. So only you have to just reflect upon yourself. That's it. There's a lot inside you. Everybody has पूरी कायनात बसी हुई है अपने अंदर। हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं उसके बारे में, यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। या जबकि अंदर ही, अपने अंदर ही सब अंदर ही है। सभी ने कहा है, सब संतों ने और सब लोग ने कहा है कि आप में ही है सब। You're not the qatra of the ocean, you're the ocean itself. Never have I ever considered moving abroad for music. No, I have not. मेरा देश महान है यार, भारत माता की जय। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैं जाकिर हुसैन साहब के साथ में एक कॉन्सर्ट सीरीज़ में गया था अमेरिका। तो मैंने जाकिर भाई को पूछा, दिस वाज इन 2003 आई आस्क्ड हिम लाइक, जाकिर भाई आपके पास तो यूएस पासपोर्ट होगी? ही सेड नहीं, आई एम एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर। ग्रीन कार्ड तो है बट इंडियन पासपोर्ट मतलब आपको जब भी ट्रैवल, कितना ट्रैवल करते थे? राइट। जब भी आप ट्रैवल करते हैं आपको वीज़ा सिक्योर करनी पड़ती है। सर हाँ, मुझे करनी पड़ती है। Even after having green card? Still, US passport, if you're going anywhere, you need a stamp, no? You need a visa. Right. Because you got an Indian passport. Mm. So I said, he said, I can never ever give up my citizenship. I was like, wow. He was my hero, man. He'll always be my hero. Ustad Zakir Hussain. Yeah. May he rest in peace. He's still around, man. He's still around. For me, he's absolutely around. He's around for everyone. Everyone has Ustad Zakir Hussain in them. Yeah. Because we've learned so much from him. I had also. So he's still around. Yeah. So I have, that thing moved me. And I mean, of course, I was always a patriot. I always, but वो सुनने के बाद ना मेरा assurance और भी बढ़ गया। और मैं जो सोचता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे एक वो मिल गया, आश्वासन मिल गया कि मैं कभी सोच ही नहीं सकता हूँ और किधर कोई दूसरे देश में रहने के लिए या कुछ करने के लिए। और कहाँ हम लोग कितना कर रहे हैं यहाँ इंडिया में? Yeah, that's. कोई करता है क्या 100 शो साल के? I don't think so. करते होंगे अभी, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ बैंड्स में करते होंगे, पर हम लोग तो बहुत खुश है यार। What if aliens landed and asked you to play one song to represent Earth from your
discography or भाई मैं तो बना ही रहा हूँ भूमि कोई Which भी song? भूमि का गाना कोई भी पसंद कर बिकॉज अर्थ की बात किया तो मैं तो भूमि बना ही बना ही रहा which song would you choose? I think I would do a song if they and they asked me to perform. Yeah. If they came and asked me to perform, matlab, like Yeah. in a good way or in a In a good way. और you know कि आपको अर्थ को बचाना है. अर्थ को बचाना है तो क्या तो फिर ये हौसला गाऊंगा अगर ये हौसला कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या और अगर ऐसे सेलिब्रेशन की बात होगी तो चक दे गा दूंगा Chak de. Oh God, thank you so much for that song, sir. I have never had the opportunity to thank you for that song. no please But it's just it's not my song anymore it's everybody's it's everybody's song. It's our song actually. exactly It's amazing. but thank you Just so much for evokes- having me भाई Sir, और बाकी है. अच्छा बाकी आज करो What if मुझे लगा बाकी आपने है? हाथ मिला नहीं, दिया नहीं, तो मैं तो चक दे के लिए थैंक यू बोल रहा हूँ. आइए लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि पॉडकास्ट क्यों। सबसे पहले तो आई लव दिस फॉर्मेट और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आर्टिस्ट्स को अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा फ्रीडम मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा और ये हमारी कोशिश है वो अनसुनी स्टोरीज आप तक पहुँचाने की। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग नकाश एज इज़। If you were to form a band with people alive or dead, who would you choose if you had to like make a band of your own and you could choose from I artists? already am loving my band and I'm living my dream but I would मेरी एक तमन्ना है to collaborate with this artist called Seal Oh, very good singer and I mean he's my hero again so I would love to work with him and I love this bass player called Marcus Miller God there's something else yeah these two people so Seal They both as a alive. vocalist, Marcus Miller as a Yeah. bass guitarist, And I think you as a keyboard. I think that's happening in Bhumi soon. oh God that could yeah Inshallah, Listen, inshallah. yeah. That And would be one of amazing. my favorite bands is Dirty Loops. It's another crazy band. Yeah. Oh, if you guys collaborated, it is again वो धरती फटने वाला kind of a collaboration actually. Would Yeah. love to see that, sir. Please. I'm gonna make it happen. Inshallah. Yeah, inshallah. Okay, I good. think. Thank you. Would you rather lose Wi-Fi for a week, or be allowed to sing only in one genre for a week? Wi-Fi. No, I would need Wi-Fi, bro. You would need Wi-Fi. एक genre में नहीं करूँगा. Yeah. Being practical. Are you a very busy man on the phone, like Oh, yeah. on Instagram Of course, and yeah. YouTube? What is No, your I'm not so crazy poison? about ऐसा कुछ नहीं है मैं तो मतलब खाते खाते ऐसे ही सर्व कर लेता हूँ मेरा एक स्टैंड है खाने पे अच्छा. ऐसे स्टैंड रहता है और फिर मैं खा रहा हूँ और फिर मैं ऐसा देखते हो अब खाने के पहले ढूंढते हो कि मैं नहीं ये देखता हूँ ऐसा पहले. Sometimes टॉयलेट में कर लेता हूँ पोस्ट कुछ मैं ऐसा इतना कुछ पागल नहीं हूँ गाड़ी में कर लेता हूँ एयरपोर्ट्स पे किसी से बात करके कुछ स्टोरी डाल देता हूँ कुछ आई एम वेरी क्विक लाइक दैट You don't think much before putting on social media or anything. डाल दो ऐसे ही. I use it as an extension to my personality. Do you I browse don't a use- lot? नहीं No. on Instagram just to check कि कौन क्या कर रहा है नहीं मतलब हाँ, ऐसे कर देता हूँ, generally ऐसा खाते-खाते because ऐसा you find थोड़ा- so many people also. हाँ जाते जाते से लाइक कर देता हूँ कमेंट मार देता हूँ कर लेता हूँ Are you able to keep your personal things? Like, do you derive your work like an artist? आप तो एक artist 24/7 हो और ये दुनिया भी है at the same time. Yeah. But एक artist जब कुछ थोड़ा दिमाग थोड़ा अलग चलता है, I think थोड़ा अलग नजरिया होता है. सबका अलग ही नजरिया होता है उस तरह से, बट आई थिंक आर्टिस्ट का एक काम होता है एक इमोशन समझना, उसको एनालाइज करना. डू दीज थिंग्स लाइक एवर क्रॉस ईच अदर इन अ वे कि आप पर्सनली और प्रोफेशनली जो सोच रहे हो? My profession is personal, bro. No, not music. Everything. Your belief system. My belief system is everything is one. It's in sync. My belief in my faith, my music. That's why if you see, I make a lot of devotional songs. And
my approach as a human being is all very connected. I'm not living multiple lives. I'm living one life. I'm very clean that way. I have no filters. It's one. It's all one. So I don't consider like, okay, कल मुझे बैंक में कुछ जाके साइन करना है तो वो एक टास्क है मेरे लिए. वो एक टास्क है. Right. But everything else is just like it's part of my everyday thing, and it's like meeting you, talking to you, or meeting Naushad Bhai, or meeting anybody it's just part of my personality. It's part of my it's part of my music. मेरे पास फॉर्चुनेटली कुछ लोग हैं जो मेरा बाकी का कर लेते हैं. मैं कुछ नहीं करता हूँ और मैं सिर्फ म्यूजिक करता हूँ. और उसमें भी मैं पार्टी वार्टी में नहीं जाता हूँ किधर भी. जिस पार्टी में जाता हूँ उधर पैसे लेके आता हूँ. सॉरी 2-3 गाने वाले का सॉरी. मैं ऐसा ही हूँ मैं. सही है सर, सही है. That's beautiful. Cut the noise वाला हिसाब किताब. Cut the noise, bro. Cut the shit. Yeah, just there's so much going on that just live. My friend Imad here, he had a question which he specifically and very, Go on. Specially he asked me to My ask you stomach is this. growling. Bismillah Huh. is a song that you composed. Ji. It's a Ginan. What was the process of that song, making it, when you just, how did that thought come to you, okay, I will incorporate it here in this? यार मेरा एक दोस्त है इरफान सिद्दीकी जिसने अली मौला लिखा है, जिसने Right. बहुत सारे गाने लिखे, आशाएं. तो मेरी तमन्ना थी कि मैंने कभी जिंदगी में कव्वाली की नहीं थी कंपोज. तो आई आस्क्ड हिम कि यार मुझे कव्वाली करने का बहुत शौक है, मुझे मन हो रहा है, तो तू लिखेगा क्या? तो ही सेड ठीक है. सो आई सेड मेरे पास एक वर्ड है बिस्मिल्लाह. आई वांट टू डू समथिंग विद दिस बिस्मिल्लाह. सर यार माशाल्लाह बहुत अच्छा है यार, इट्स वेरी गुड. तो बस उसने लिखा कि बरकतों का पैगाम मिले कहने से ला इलाहा इल्लल्लाह, रहमतों का सलाम मिले कहने से बिस्मिल्लाह, तेरे नाम से शुरू हुआ तेरे नाम से ख़त्म लिल्लाह बिस्मिल्लाह. ऐसे कमाल है यार. तो मैंने उसने पहले कुछ लिखा था तो मैंने बनाया, फिर मैंने उसमें एक तर्ज बिठाई, थोड़ा गिव एंड टेक हुआ. देन तेरे नाम से शुरू हुआ, ये लाइन पहले नहीं थी कंपोज. बिस्मिल्लाह. जनरली कवाली में ना ऊपर के नोट्स ज्यादा होते, बट आई डिडंट वांट टू डू दैट. आई वांटेड टू जस्ट कीप इट लो. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हाँ बिस्मिल्लाह. आई जस्ट वांटेड दिस टू गो ऑन. फिर वही करते करते तेरे नाम से शुरू आ गया था वो. सो देन इस तरह से एक मुखड़ा बन गया था. फिर देन ही रोट सम मोर लाइन्स, आई कंपोज सम मोर लाइन्स, कर के एक कवाली बन गई. 2 महीने बाद एक कोक स्टूडियो का मुझे एक ऑफर आया कि आपको करना है. तो मैंने पहले ये गाना सुना है उनको कि मैं करूँगा कोक स्टूडियो. ऑफ कोर्स करो. Thank you so much, sir, and Arey, thank you so much for making it. Thank you and wish you all the best. I'm so thank glad you, sir. that this Thank you you, started sir. this series. I hope कि बहुत सारे कमाल के आर्टिस्ट और आपके साथ जुड़े and Absolutely, thank you, sir. ये पॉडकास्ट का सीजन चलता रहे आपका. Inshallah, sir. Thank you so much, sir, and of course, Bhumi में Yes, Marcus Nakash. Miller and Of course. और कभी नकाश अजीज भी अगर आ जाए. Of course. Nakash as is. As is. Thank you, sir. Thank you so much. The amazing Salim Sahab, sir. Thank you As so much. is.